Hello, good evening, and a very warm welcome to the next session of the Powerhouse Series BFSI. I really am thankful to our trainer today for making it to the session, despite all the technical glitches that we were facing in joining. Uh, Today's trainer is Mr. Rauf Ali Jan. Most of the members here are already aware about Mr. Rauf. Mr. Rauf is an FCCA. He's working in HBL as the lead for digital transformation and agile auditing. On top of that, he is our MNP member for the year 2022 and 2024. And on top of that, he was last year's Regional Advocacy Award, National Advocacy Award winner from Pakistan. So, without wasting any more time, I'll hand over to Mr. Rauf. Over to you, Rauf sir. Assalamu alaikum, everyone. Thank you, Firoz. Thank you very much. And thanks to ACCA as well. Starting from, because this is most of the time one-way street where I speak and you guys listen. Please do include everything in the comments, whatever you would like to share and talk about. I've been talking to ACCA to make these webinars more interactive, and we'll come up with some more interactive engagement things, such as maybe Slido.com or Mentimeter or something like that. Because when we are moving to the webinar series, we should be more engaging with the members instead of just using something as a one-way street where I talk and you are just listening. In the beginning, a few housekeeping things. One is, if you are unable to hear me or if you have any problem, do write it in the question and answer board. Firoz and the ACC team normally are very agile in that. They normally are available and reach out to us that this is how, or some of the members are unable to see or hear your voice. So we'll manage that. Secondly, if you have any questions, don't wait till the end. We'll take some breaks and we'll address your questions and we'll go from there. Our webinar was supposed to be 120 minutes, but I think we have lost 10 minutes in the beginning, and my apologies for that. Although I am very keen on developing technology in HBL, but there are certain things where we have to follow the protocols, and one of the things which I had to download was GoToMeeting, and it was not allowing me to go to that website. We have WebEx, we have Zoom, we have Teams, but this specific meeting website was not accessible, so I had to call the IT guy to take the permission, which is a good control, and that's how I'm talking to you. Now, briefly telling you about myself, Feroz very kindly has explained that who am I and what are we going to do. But what I'll do is I will start talking about, let me just briefly introduce myself. My name is Rauf Ali Jan. I did my CA, and after doing my CA, I did my ACCA, and then I did my, after doing my ACCA, I moved to PwC in Bahamas. I was working in PwC in Pakistan, Karachi. After moving to PwC Bahamas, I moved to Canada, where I worked with Baker Tilly for a year. Then I did my CPA Canada, which was the CA at that time, not the CGA one, but the CA one where you have to attempt papers. Then I did my, I got a job in EY. I got promoted to senior manager there, and in the meanwhile, I started doing my MBA from York University. After doing my MBA, I joined Royal Bank of Canada, which was one of the largest bank in Canada with more than $100 billion of market value and more than $5 trillion of assets, $5 trillion of assets they manage. After working in Royal Bank of Canada, I moved back to Pakistan in 2019 and joined HBL Internal Audit. I've been working with HBL Internal Audit for the last 3.5 years. And in that time frame, this is my third title. I started as head transformation, where I was transforming the internal audit function, where I started with updating the policies and procedures. Later on, I started working on
digitalization, and we implemented a lot of digitalization in internal audit. And now I have started working on international audits and thematic reviews and application audits. As you can imagine, with the size of bank HPL, as we have more than 100 applications in the bank, which are working from core banking system to the applications which we use just for internal audit purposes. So all these applications we audit, and we are finding a new way to audit these things. Uh, that's about me. This is what we'll be talking about in today's session. We'll try to cover it in next 1.5 hours. What we'll do is first half hour, I will talk to you about how the digital transformations are affecting the financial services. Then we'll talk about fintech. What is fintech? How does it impact us from startup and impacting on finance professionals? Also, we'll talk about some of the startups as well. Later on, we'll talk about big data and some of the data analytics things. We'll talk about some trends and SWOT later on. And then we'll have a good question and answer session. I think I'll be able to spare 30 minutes to question and answers. But if you have any question, any valid observation, do not wait and ask that in the Q&A session. And Firoz, if there is something, some questions which are legitimate, relevant to the discussions which we are having, please do read it at the end of the session, not the full session, but if I finish the digital transformation part, then or at the switch of the slide, I'll be more than happy to address that, because it will increase the productivity or the effectiveness of this webinar. This is the definition of startup. Startup is any company which is built to resolve the issue, which is built to resolve a problem. And there are lots of startups which are working. These are some of the local startups which we have seen. Bikea is there, Airlift was there until it went away. Zameen is still there, Finja is there, the Y.PK is there. These are some of the startups and their companies or their profitability which we have seen in recent times. Before moving on to startups, why don't I talk to you about some of the interesting things about the digital transformation part. Yes, these are some of the things I would like to talk about in the beginning. This is taken from ACCA magazine. If you are able to see this slide, this is what the digital leadership is talking about. This is what the digital transformation is going to look like, how it is going to affect the financial services, how it is going to affect us, how it is going to affect the banking sector specifically. So if you focus on what are the top leading trends, digital transformation, what is digital transformation? Let's start with that. We know that a lot of companies, a lot of startups, a lot of fintechs, a lot of companies know that they want to become a disruptor. They want to become a company which can grow significantly. They want to become a company which has a lot of potential, which can target a lot of a bigger market, because technology, the reach of technology is huge. If you can see that HPL has more than 1600 branches, but it can only operate through brick and mortar system. Even with 1600 branches, you can imagine what is our reach. We can just reach out to like 1600 branches into 100,000 people. Will be able to reach out to 160 million people. But if you think about areas where we are not, we cannot reach a small town, a small city, because managing a brick and mortar system is going to be very difficult for us. You go to any rural area of Karachi of Pakistan, and you will see, just leave National Highway 5 when you're driving from Karachi to Lahore, and you will see that there are Thatta, there is Mithi, there is Moro, there is Sakkar is a bigger city, but if you go to Sadqabad, if you go to Rahim Yar Khan, if you go to Bahawalpur,
These are smaller cities. Bahawalpur may have a lot of branches, but if you go to Liaqatpur, if you go to Zahirpir, if you go to smaller areas of Karachi or Pakistan, you will see that there is whatever number of branches you obtain, you will not be able to target 100% of 100% of population. So you have to use technology, and technology disruption. Everybody wants that. Everybody in Pakistan, like 50 to 60% of population in Pakistan has access to the mobile smartphone. So if you have that technology available, you just have to use that technology for your benefit, and you will be able to target that through technology. So everybody wants a digital transformation. How do you get financial services access from brick and mortar to everyone on their mobile phone is through digital transformation. So everybody wants to target the market, the untapped market, the blue ocean strategy, that the market which is untapped, why don't we just target that? It is being held by constant emerging disruptive technologies and the business model innovation. There are so many things happening. Like in Pakistan, if you see the use of Facebook, the use of WhatsApp, the use of Instagram, the use of Twitter, the use of LinkedIn, you'll realize that there are so many things which everybody is using. There are so many apps which everybody is using, Google and YouTube, and then local competitors like Daraz is there. So why don't we just tap into that in financial services? When 10 years ago, 15 years ago, when EasyPesa was being launched, there was no other app which was competing with EasyPesa, and it was very difficult for that market to digitally transform the banking industry into the app or in the system where there are no branches. But nowadays, we can see that there are so many banks. Jazz Cash is there, EasyPesa is there, and that has transformed significantly. What is digital transformation? If you see the lessons learned and trends, you'll see that it's a design at the top level where you make the strategic decision making. But how does it happen? It affects the bottom, the granular part. But the design level strategic thinking is where the digital transformation happens. If you think that making the change from brick and mortar system to the digital transformation system is easier, you need a bigger infrastructure. You need a very big infrastructure. You need the mindset change in people. You need a lot of the very big platform. You need processes which can approve the digital transformation systems. Just think about the account opening. Brick and mortar, you have a physical form which a customer fills out in the branch. Now you have to have that in the app, which cannot have 100 columns because a normal person does not understand that process. Normal person knows this is my CNIC, get all the information from Nadra about my address, about my father's name, about my date of birth, and then just talk to me about what am I looking for. If you're looking for cash transactions, this is what you would be dealing with. If I'm looking for ATM transactions, this is what you'll be dealing with. So all these things will be happening at the top level design thinking, and then it will go towards down the line towards the end. Digital transformation does not happen. If you have to implement it, you have to think about that digital transformation happen at all levels, and you'll have to have champions who are catalyst to this implementation. If you're just thinking that top of the house, everybody has decided that we want to implement the digital transformation, and tomorrow onwards there will be no brick and mortar system, but we will go and have everything on the digital platform, but there are no champions to implement it, it will never be implemented, because the people, the consumer will still be going to the branches. You have to embed that into their mindset that you can open the account online, and then the flexibility and the benefits, they are all there, but you have to tell the consumer that this is what you are going to do. You have to build the processes around it. You have to build the controls around it. Data capability is the basis of digital transformation. This is very big thing. Whatever you do, it is saying that my network connection is slow, so I'm going to turn off my webcam. My apologies for that. Let me know if you have any problem in listening to what I'm saying, and I'll try to fix that. I'll try to switch to the other Wi-Fi network.
Data capability, we'll talk in detail about data capability, that how can data be used in digital transformation. I'll give you a few examples. I'm assuming that everybody has used Ras.pk or Metro Cash online or any other services online. When you go and just click on one of these options, whether you go to Amazon, whether you go to Daraz, whether you go to What's Mobile or Priceway.pk, you will see, or Zameen.com, you will see that whatever you search, next time your search will be visible to you in the similar fashion. If you have searched a shirt, it will tell you that shirt goes with the trouser, or dress shirt goes with tie or cuffling. How do they know that? There is an algorithm running behind it based on the data which you have clicked on. So the data capability changes the transformation. It is the biggest catalyst of the transformation. How's the CFO impacts, or how does the CFO helps in digital transformation? Dr. Sab, Sorry, Firoz, sorry. are you saying something? Ji. Yes, sorry to interrupt you. I think your slides are not moving. Okay, okay. Is it moving now? Yes, we are on technology challenge. We are on disrupting with Yeah, network liquid organizations. yeah, Okay. yeah. Okay, okay. I did not move the slide for last 4 or 5 minutes because I wanted to focus on a couple of slides for digital transformation. And that was the first slide because I wanted everyone to understand that this is what the digital transformation looks like. The role of CFO is very critical for digital transformation. CFO may not be considered as a main role like business in banking services or in insurance industry or mutual fund industry is considered the main driver of the business transformation, but CFO's role as a control environment enabler is very critical in understanding how do they manage the overall control environment of the bank. So that is very important from digital transformation perspective. Moving on to disrupting the network liquid organization. These are the 4 features which digital transformation organization should have. New core driving force, transform to customer centric. The thing which we started with is, if you want to do something digitally, what is the main core objective of that? You are trying to resolve an issue, and that issue is customer centric because you are targeting the customer, that this is how you will be able to transform that. This is how you will be able to focus on customer centricity. This is how the customer will come directly to you instead of going to another competitor on the brick and mortar system. The other one is new innovation method. The biggest thing which helps everyone is making their life easier. Instead of going to the branch and paying your electricity bill, or instead of going to the branch and uploading or paying for the mobile bundles, you are paying everything through your mobile. You are using Rast ID, you are using interbank fund transfers, or whatever it is, but it is based on innovation. New organizational structure. This is also very important, that you are connected. Everything in the system is connected. If you go to any mobile app and you have to go to a separate app for credit card, then a separate app for debit card, and then a separate app for your mutual fund, then a separate app for your insurance from the same bank, then there is no connectivity. You have to connect all the processes together. You cannot say that, okay, account opening, you have to have a separate app, and for bookkeeping, you have to have a separate app, and because we'll help you in your mutual funds, you'll have to have a separate app. Everything has to be very connected in detail. The transformation happens at they use it not at a linear rate but a geometric rate, exponentially. Transformation happens at a pace that people are not used to of seeing. If you see the connectivity, if you see the growth which we are seeing in IBFTs, if you see the transformation, if you see the growth we are seeing in the branchless banking or mobile wallets, you'll be surprised. Nobody has ever imagined that this is the level of customers we'll get on through the digital channels. So the acceleration, the the growth is tremendous.
but that there are so many challenges with that. We have recently seen how the airlift get out of the business, how Wawa Cars and Car First and all these companies went out of the business because they could not continue with the growth, because when you are investing so much money and you are continuously focusing on making or getting new clients, it becomes very difficult to focus on uh, keeping your numbers, keeping your revenue, keeping your profit, keeping your cash flows. Cash flow is the very big thing in the digital transformation world. You have to manage all these things in the right manner, and that is where the role of CFO comes in. With that being said, I would like to take a pause for a few minutes, and I would like to focus on if you have any questions, please do ask me, and we'll take a few minutes pause so that if anyone has any question, we'll be able to address that. Firoz, if there are any questions from audience, I would like that we address them over here for digital transformation. Okay, Shrav, I'm looking at the questions dialog box, and I haven't received any question. Guys, if you have any question, please type in your questions, uh, specifically pertaining to digital transformation. Yeah, I would like that. I should give a couple of minutes to everyone, and then we go from there. So why don't you type the question, and I'll cover one more slide, and we'll go from there. Please do ask questions as much as you can so that I'll be able to understand your We have received understanding an better. interesting question. Yeah, so why don't I complete this slide, and then we'll go to the questions. So you'll have a couple of more. अच्छा जी, टेक्नोलॉजी चैलेंजेस फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते हैं ना, हमारे पास एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी होता है कि हम किस तरीके से जो चैलेंजेस अभी मैं बात कर रहा था आप लोगों से, कैश फ्लो के चैलेंजेस की और कंट्रोल एनवायरनमेंट के चैलेंजेस की, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखें, अगर आप देखेंगे ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस बट विल टेक इट टू फाइनेंस एज वेल। आप देखें टेस्ला ने कार बैटरीज बनाना शुरू करी। उसने कहा कि हम ऐसी गाड़ियां बनाएंगे जो कंबस्शन इंजन पे ना चलें और जो बैटरीज से चलें। Every other company in the world have started making that, but they are unable to compete with Tesla because they have old system, old infrastructures, which is stopping them, while Tesla can make the decision in a very small period of time. Same thing happens with the financial services. You can imagine like a big bank would have so many systems, structure, infrastructure, processes for them to build and get the approval. But if you look at the fintechs, if you look at the smaller companies, they have very limited uh, hierarchy. Their CEO would be 35 years old guy who would be making the shots, and CTO would have 2 or 3 people's team instead of a big giant company or big giant bank, which would have hundreds of people in technology department, and a lot of things would go in red tapeism. So transformation for digital transformation, you would need to have a very good IT infrastructure, and sometimes it's easier to start a new infrastructure than to continue with the new with your existing infrastructure. Uh, the other thing is artificial intelligence base is very poor, and what does that mean? If anyone understands what artificial intelligence is, it's very difficult for computer to understand what the output would look like. You can show the like how does artificial intelligence or machine learning works is that you would like that when a customer comes in, you provide them with the exact thing which they are looking for. Like if I walk into the bank should be able to tell me tax efficient way of investments.
But how would banks start thinking about it? How would artificial intelligence or how would the digital transformation would tell me that you need to start investing in mutual funds or stocks or pension plans or mortgages where we have tax benefits? How would the system learn? To make the system learn, you have to give them a lot of data. You have to provide them the past history. Like take for example the example of IFRS 9. You have to give them the probability of default from the past to predict the future. You have to tell them that when the customer was running DBR or debt burden ratio of 50% or 60%, at that time the customer is in trouble. Or when the economy or recession is coming, then this will be the first person who will default. You will have to provide them data with the stress testing, and then when you will provide them the data, actual data, then at that time they will be able to identify based on artificial intelligence that this is when A, B, or C person will default, or this is what A, B, or C person needs. So this line which says artificial intelligence base is poor and needs to be from 0 to 1, to get to 1, you need huge data from 0 where you'll be telling them, okay, this is what you are going to use that and to come up to the answer. A lot of algorithms, a lot of data needs to be put in to suggest that, okay, a person who's looking for shirt will also buy the trouser, or a person who is just asking you for a mobile phone would also be interested in getting a cover. Uncertainty caused by rapid transaction technology attrition. This is one of the biggest challenge. You have seen that we learn a lot and we use a lot of technological things, but technology obsolete very soon as well. I don't know if you have seen, there were so many like Yahoo.com. Yahoo Mail was one of the biggest thing when we were growing up, but it went away very quickly. Similarly, there are so many like take the example of airlift. When we were talking about last year at this time, it was one of the success stories that airlift has done this. They have switched their model so quickly from A to B. Instead of being the car sharing service, they have become the delivery service very rapidly. But because the technology changes so rapidly that previous technology become obsolete, when we started using the when I started using the laptops or machines, Pentium 1 used to be the first machine, and it was very aggressive or very it it was considered very good application. But later on, what happens is from Pentium 1 we went into RAM of 512 KB, and then we went into TDR RAM, then we went into SSD RAMs, and the RAMs tend to change very quickly. We went from Pentium to these Core 7, iCore 7, 9th generation, 11th generation, and previous technology is obsolete so quickly that if you don't use it, if I give you the example, have you seen the debit cards or credit cards? Credit cards were used to be on based on Stripe, used to stripe them, then chip came in, now NFC came in. You don't even have to insert the card into the machine. You just tap the card and you go away. Talk about technology, ATM machines used to be, which is also a digital transformation that everybody was using ATMs, but now you have to have a biometric in ATM. There are banks, including HPL, which allows you that if you don't have a debit card and you want to withdraw money, just use your thumb impression and you will be able to withdraw money. So ATM machines become obsolete if it does not have a biometric sensor available. Flexible technology ecology, that is very important. Moving from A to B and B to C with existing luggage is very difficult. If you have like it links with the first one, IT infrastructure, but flexible technology ecology ecosystem to run a country, to run a system is very important. Um, I'll give you an example. State Bank of Pakistan is very supportive. They started EMI, they started mobile wallets, they recently launched RAS. They are going to a digital bank. They are providing with the right ecology. But if you think about it, the ecosystem for digital transformation is very difficult for rural areas. Like there are areas in Pakistan where we have we find it difficult to have internet connectivity smoothly.
like I'm sitting on 22nd floor, and when my internet was not working, it's very difficult that I'd be able to use hotspot, because ecosystem in Pakistan on 22nd floor does not work, does not support the Wi-Fi or 4G technology. The signals move to 3G or sometimes 2G, or just sometimes just on edge. So ecology or ecosystem has to be very strong. So this is where I finish with these technological changes. I finished the digital transformation part, and I would go back to answering the questions which we have. Firoz, over to you. Thank you, Rausha. First question from Ali Noor. How to achieve digital transformation in insurance sector in Pakistan? Any thoughts on that? हाँ जी, क्यों नहीं। देखें, इंश्योरेंस में मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं कनाडा में था तो माय वाइफ एंड आई हैड टू डिफरेंट कार्स, और होता ये था कि वीकेंड में हम सिर्फ एक गाड़ी चलाते थे। तो कनाडा में या आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान इंश्योरेंस इज़ अ वेरी बिग कॉस्ट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि वी विल, अगर आप हमसे कमिट करते हैं कि आप 7 में से सिर्फ 5 दिन गाड़ी की इंश्योरेंस कराएंगे, तो विल अग्री टू दैट। और हमने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस को, हम उसमें करते ये थे कि हम 2 गाड़ियों की इंश्योरेंस 5 दिन कराते थे और एक गाड़ी की इंश्योरेंस 7 दिन कराते थे। तो उससे होता ये था, क्योंकि जब हम दोनों घर में होते थे तो हम दोनों एक ही गाड़ी यूज़ करते थे, तो वीकेंड पे हम इंश्योरेंस नहीं पे करते थे। व्हाट इज़ इट टेलिंग यू, वहाँ पे लेमिनेट के नाम से एक कंपनी थी, एक स्लाइस के नाम से कंपनी थी, विच यूज टू प्रोवाइड अस इंश्योरेंस बेस्ड ऑन व्हेन आई बुक इट। अगर मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ और मैंने 3 हफ्ते की छुट्टी ली हुई है, तो मैं उनको बोल देता था इन 3 हफ्तों में मेरी इंश्योरेंस ना कराओ। अब नाउ थिंक अबाउट इट कि ये वो काम कैसे कर सकते हैं। अगर उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकता। कैन यू इमेजिन दिस टाइप ऑफ थिंग इन पाकिस्तान, जहाँ पे हम ये काम इस लेवल पे जाके कर सकें। उनके पास डाटा मौजूद था कि हाँ, सैटरडे को मुझे इतनी इंश्योरेंस चार्ज नहीं करनी, या मैं 350 की जगह 250 दिन की इंश्योरेंस चार्ज कराना चाह रहा हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हाउ इंश्योर टैक्स वर्क। ये ज़ाहिर है, जो आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की इंश्योरेंस के हवाले से, उसकी मैं बात बता रहा हूँ आपको। सेकेंड चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैंने वहाँ पे अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराई। नाउ लाइफ इंश्योरेंस में एक मैं, अगर मैं हेल्दी हूँ और एक बंदा जो दूसरा अनहेल्दी है, उसकी इंश्योरेंस का प्रीमियम डिफरेंट होता है। और हर इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आपसे डिफरेंट किस्म की चीज़ें करवाती है, मतलब टेस्ट कराती है, ब्लड शुगर टेस्ट कराती है, सीबीसी कराती है, सारे टेस्ट करा के दे टेल यू कि आप स्मोकिंग नहीं करते तो आप इतनी इंश्योरेंस देंगे, आप नॉन स्मोकर या आप स्मोकिंग करते हैं तो आप इतनी इंश्योरेंस देंगे। बट वो लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू गिव अस अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन आवर मोबाइल ऐप, और एक वाइटैलिटी के नाम से मेन्यू लाइफ की एक ऐप थी। और वो लोग क्या करते थे, मेरी, अगर मैंने महीने में 15 दिन अपने 8,000 या 6,000 स्टेप्स जो उन्होंने मुझे कहे थे, अगर मैंने वो कर लिए कंप्लीट, तो दे विल गिव मी अ डिस्काउंट ऑन माय इंश्योरेंस, बिकॉज देन आई एम लिविंग अ हेल्दी लाइफ, और वो वहाँ से फिर मुझे बेनिफिट देंगे। So these are some of the things which I am telling you, how they used to gather data, और वो किस तरीके से इंश्योरेंस पे इम्पैक्ट करते थे। इंश्योर टेक या इंश्योरेंस में जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जो डिसरप्ट कर रही हैं, वो डाटा की बेसिस पे कर रही हैं, बिकॉज डाटा इज़ द की फॉर इंश्योरेंस। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आप पैसा सेव कर रहे हो, ताकि आप उस कस्टमर को, जो अच्छा कस्टमर है, उसको बेनिफिट दे सको। दैट प्रॉब्लम नीड्स टू बी एड्रेस्ड। पाकिस्तान में इंश्योरेंस इज़ I would say is in a very infancy stage. Not a lot of people go towards insurance other than these जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, जहाँ पे हमारे पास ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स में काम होता है, और कंज्यूमर में हमारी शायद इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा अभी इसमें काम होना बाकी है। और इस तरह की बहुत सारी डिसरप्शंस हैं जो इंश्योरेंस के अंदर अभी हो रही हैं या होना बाकी हैं, और मैच्योर कंट्रीज़ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमनली हो रही हैं। जी फिरोज, ओवर टू यू। Thank you, Rishabh. Another question from Mohammed Zashan Ali Jafri. Uh, he's asking, can you recommend some essential controls required for transformation? देखें, कंट्रोल एनवायरनमेंट, जहाँ भी आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जैसे भी आजकल हम, क्योंकि मैं ऑडिट में हूँ, तो वी टॉक अ लॉट अबाउट कंट्रोल्स। अभी हम
HPL में कुछ बॉट्स लगा रहे हैं, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, जैसे आप शॉर्ट में RPA या बॉट्स कहते हैं। अब बॉट्स के अंदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ के कंट्रोल्स नहीं होते, तो हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पे हम कौन सा कंट्रोल इम्प्लीमेंट करें कि वो दोनों मेकर और चेकर के कंट्रोल्स को टेस्ट कर सकें। इसी तरीके से जहाँ भी आप कोई भी कंट्रोल इन्वायरमेंट बनाते हैं, हर जगह कंट्रोल्स, तो कोई भी अगर आप प्रोसेस बनाते हैं, आपको हर जगह कंट्रोल्स तो इम्प्लीमेंट करने ही पड़ते हैं। यू हैव टू बेसिकली थिंक अबाउट कि कहाँ पे कौन सी चीज़ वीक होगी, कहाँ पे किस तरीके से कंट्रोल हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे सिंपल आपको मैं बताता हूँ, अभी आपकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई कि आप लोगों का जो बैंकिंग का प्रोसेस है ऑफ क्रेडिटिंग द इंटरेस्ट इनकम टू कस्टमर्स, जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है, आपने कहा कि मैं आपके डेली बेसिस पे, जो आपका डेली बेसिस का डेली डे एंड का बैलेंस होगा, उस पर मैं आपको मंथली बेसिस पे 1% का इंटरेस्ट दिया करूँगा या आधे % का इंटरेस्ट दिया करूँगा। अब आपने कंट्रोल इम्प्लीमेंट जो करना है फ्रॉम ऑडिट पर्सपेक्टिव या कंट्रोल एनवायरनमेंट, और यू हैव टू मेक श्योर कि उसकी जब यूएटी हो रही हो, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो रही हो, या जब आप ऑडिट करने उसका जाएं, तो यू विल लुक एट द क्वेरी, यू विल लुक एट आइडेंटिफाइंग कि किस तरीके से हम चीज़ों को, वो जो क्वेरी राइट हुई हुई है वो डे एंड का बैलेंस उठाती है, वो उसको एवरेज करती है, उसको 0.5% से मल्टीप्लाई करती है और उसके बाद वो कैलकुलेट करती है। दिस इज़ द कंट्रोल विच समवन हैज़ टू बिल्ड। टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल्स जो हैं वो टेस्ट ऑफ वन पे चलते हैं। अगर आपका एक कंट्रोल एक सिचुएशन में सही काम कर रहा है तो वो सारी चीज़ों के लिए सही काम करेगा। ह्यूमन एरर हम कहते हैं कि वो हो सकता है फिजिकल कंट्रोल, मैनुअल कंट्रोल्स के अंदर, बट टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल्स में ऐसा नहीं होता। देर इज़ वेरी गुड, अगर आप यूएस, ये जो हमारे पास है सॉक्स के सेक्शंस हैं जो यूएस रेगुलेटर की तरफ से, एसईसी की तरफ से आते हैं, 404 के अगर आप सेक्शंस देखेंगे तो यू विल सी कि उसमें बहुत अच्छे एप्लीकेशन कंट्रोल्स के टेस्ट्स मौजूद हैं, एंड देयर आर सम वेरी गुड इनसाइट्स अवेलेबल। मैं सोच भी रहा हूँ कि मैं शायद कुछ इन चीज़ों को अपने लिंक्डइन पे, क्योंकि बहुत सारी फ्री टेक्स्ट अवेलेबल है, फ्री बुक्स अवेलेबल होती हैं, तो आई विल स्टार्ट शेयरिंग देम ऑन माय लिंक्डइन। प्लीज़ फॉलो मी देयर एंड देन विल बी able to share those जो ICFR के और internal control और financial reporting के टेस्ट और application controls के टेस्ट हैं, which are there in the example from Protiviti, from KPMG, from ये जो हमारे पास है Accenture से, Deloitte से, बहुत बहुत अच्छे अच्छे materials मौजूद हैं on all the examples of application controls और technological controls। जी फिरोज। Thank you, Raushab. Can we take one or two more questions, or should जी we जी move? प्लीज। नहीं मैं देखें, एरिया तो मैं कवर कर लूंगा, और मेरा फिर एक और वेबिनार परसों भी है ना, जुमेरात को भी है, तो अगर कोई चीज़ ऐसी रह जाएगी जो आज नहीं कवर हो पाएगी वो परसों कर लूंगा वेबिनार में कवर। तो व्हाई डोंट वी गो थ्रू सम मोर Sure, क्वेश्चंस। sure, sure. Salman says is saying State Bank of Pakistan is issuing licenses for setting up digital banks. So would they be more technologically advanced and able to cater customer digital need as compared to existing banks? There's another relevant question similar to this, which is branchless banking. I know a lot of people from BFSI get this sort of question that in such digital age when most of the banks around the globe have moved to branchless banking, what are the aspects of banks in Pakistan or specifically HBL? Is there any consideration on their part that they will be moving to branchless banking? By branchless banking, we do not mean that you have to fill the form online and then visit the branch. By digital branchless banking, we mean everything that we do, that we have to do through a bank, we do it wherever we are, remotely, sitting in office or sitting at home. So your thoughts on मैं that as आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। पहले सवाल का जवाब देता हूँ। डिजिटल बैंक्स के लाइसेंसेस स्टेट बैंक ने किए हैं, और लास्ट वीक अगर आप किसी भी बड़े मैगजीन का, किसी भी बड़े न्यूज़पेपर की पब्लिशिंग उठाएंगे, चाहे बिजनेस रिकॉर्डर हो, चाहे प्रॉफिट बाय पाकिस्तान हो, चाहे don.com हो, सब ने इस पे आर्टिकल लिखे, और जो क्रक्स था आर्टिकल का वो यही था कि
20 के करीब स्टेट बैंक ने लाइसेंसेस इशू करने हैं, 20 के करीब स्टेट बैंक एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं फॉर अप्लाइंग द डिजिटल बैंक्स लाइसेंस। लेकिन डिजिटल बैंक्स लाइसेंस लाने का जो मैंने कहा स्टेट बैंक की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोचेस ली जा रही हैं फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जहाँ पे अनटैप्ड बैंकिंग मार्केट को आप बैंकिंग में लाने की कोशिश करते हो। उनमें से स्टेट बैंक ने ब्रांचलेस बैंकिंग की रेगुलेशंस इशू की थी फ्यू इयर्स अगो, मेरा ख्याल 10 साल से ज़्यादा हो गया इस चीज़ को। फिर उसके बाद इन्होंने मोबाइल वॉलेट की, फिर ईएमआई की, फिर उसके बाद ये जो है माइक्रो फाइनेंस बैंक जिसमें इजी पैसा और जैज़ कैश आता है वो हमारे पास मौजूद है, और अभी इन्होंने डिजिटल बैंक्स के लिए अप्लाई करने की बात की है। अ लॉट ऑफ बैंक्स आर वेरी इंटरेस्टेड कि हमें डिजिटल बैंक्स का लाइसेंस मिल जाए। जो बैंक्स ऑलरेडी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनके पास देयर इज़ नो वन स्टॉपिंग देम कि वो सारे काम कर लें जो डिजिटल बैंक ने करने हैं, बट दिस विल अट्रैक्ट सम वेरी गुड डिजिटल बैंक्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान एज वेल इफ़ यू थिंक अबाउट इट। एक बैंक को आप लाइसेंस दे देंगे, अभी आप देखें कि हमारे पास लेंडिंग कौन सा बैंक कर रहा है, जो कि माइक्रो फाइनेंस बैंक है, या फिर जो डिजिटली आपको जैज़ कैश इजी पैसा जो है वो तो आप डिपॉजिट साइट के हिसाब से सोचते हो कि हाँ यार मैंने पैसा अगर ट्रांसफ़र करना है ए बंदे से बी बंदे को, या मैंने पेमेंट्स करनी है, वेदर इट्स मोबाइल बंडल्स, वेदर इट्स यूटिलिटी बिल्स, वेदर इट्स PSID FBR को करनी है, उन चीज़ों के लिए आप यूज़ करते हो, बट नोबडी थिंक्स अबाउट कि लेंडिंग के लिए मैं ये चीज़ यूज़ करूँ। तो इस तरह की चीज़ें जब आप लैंडिंग की तरफ भी चले जाओगे तो डिजिटल बैंक्स के पास वो सारी कैपेबिलिटीज़ होंगी, एंड इट विल बी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन फ्रॉम स्टेट बैंक्स परस्पेक्टिव कि जो भी चाहता है उसमें जाके काम करना, वेदर इट्स multinational bank in Pakistan, whether it's a domestic bank in Pakistan who wants to start a business for both lending and borrowing, including credit card, including SME financing, जिस तरह की भी चीज़ आप करना चाहते हो आप वहाँ से कर सकते हो। और इसी तरीके से जो एग्जिस्टिंग बैंक्स है वो भी ये सारा काम कर सकते हैं। तो डिजिटल बैंक से ये फ़ायदा होगा आपको कि एक बैंक जो कि डिजिटली सारा काम कर सकता है, और देयर आर एग्जांपल्स। आई विल गो बैक टू माय डेज इन कनाडा। टेंजरीन बैंक वाज वन ऑफ द टॉप 10 कैनेडियन बैंक्स, और टॉप 10 कैनेडियन बैंक होने के बावजूद उसकी टोटल मतलब आई हैव नेवर सीन अ ब्रांच ऑफ टेंजरीन बैंक। बहुत सारी क्रेडिट यूनियंस थी जो सारा का सारा काम वहाँ पे करती थी ऑनलाइन। RBC जो मेरा लास्ट एम्प्लॉयर था वहाँ पे आप विदाउट गोइंग टू द ब्रांच यू कैन हैव ओपन द बैंक अकाउंट। तो मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन में, मैच्योर कंट्रीज़ में ये चीज़ें होती हैं। नाउ कमिंग टू पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रेगुलेशन की वजह से आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जब मैं कनाडा में था तो मैंने शनाख्ती कार्ड ऑनलाइन बनवाया। पाकिस्तान में आने के बाद इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आपको नादरा के ऑफिस जाना पड़ता है बिकॉज यू हैव टू गेट द बायोमेट्रिक डन। वहाँ पे आप जो है विदाउट बायोमेट्रिक अपना शनाख्ती कार्ड बनवा सकते हो या पासपोर्ट अपना रिन्यू करा सकते हो। In the same token, the biometric requirement, you have to get that done. Somebody will visit you with the biometric device at your home. You will get it done at home. You can do it, but there has to be some other mechanism. जैसे कनाडा में हम क्या करते थे, वो हमें एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए कहते थे कि आप मोबाइल ऐप पे जाके अपनी लोकेशन ऑन करें, और आप लोकेशन ऑन करते थे तो उनको पता चल जाता था कि आप इस वक्त यहाँ मौजूद हो, और उससे फिर वो वेरिफिकेशन करके वेरीफाई करके चीज़ें कंफर्म कर देते थे, और वहाँ से फिर आपसे सवालात ऐसे पूछे जाते हैं थ्रू देयर क्रेडिट ब्यूरो कि आप वेरिफिकेशन हो जाती है। पाकिस्तान में बायोमेट्रिक मेथड के थ्रू होती है। लेकिन कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, क्या हम बगैर ब्रांच में जाए अकाउंट खुलवा सकते हैं? यस यू कैन इन पाकिस्तान टू। स्टेट बैंक ने 2021 जून में डिजिटल कस्टमर ऑनबोर्डिंग की। पिछले साल 2021, डोंट कोट मी ऑन जून, मेरा ख्याल है पिछले साल उन्होंने अक्टूबर में या सितंबर में या जून में इस तरीके से एक डिजिटल कस्टमर ऑनबोर्डिंग की गाइडलाइंस इशू की थी, जिसके तहत आप जो है डिजिटली कस्टमर ऑनबोर्ड कर सकते हो अपने पास। यू डोंट हैव टू विजिट एनी branch of the bank and you can open an account. Now coming to the other part of it, आपको nobody is stopping you from opening an account with HBL Connect, which is a fully branchless banking mechanism of HBL. You can open a bank account with Easy Paisa. You can open a bank account with Jazz Cash, जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो विदाउट गोइंग एनीवेयर। आप अभी बैठे हैं अपने मोबाइल पे
और आप अभी बैंक अकाउंट खोल लें टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ, विच इज़ ईजी पैसा, विदाउट इवन विजिटिंग द ब्रांच। आपको डेबिट कार्ड चाहिए, आप जैज़ कैश से, HBL कनेक्ट से, किसी से डेबिट कार्ड इशू करा सकते हैं। इट इज़ अ बैंक अकाउंट एज गुड एज एनी बैंक अकाउंट। जाहिर है उसमें ट्रांजैक्शन लिमिट्स आपके पास कम होती हैं अगर आप बायोमेट्रिक नहीं कराते। अगर आप बायोमेट्रिक कराते हैं तो आप ट्रांजैक्शन लिमिट्स बढ़ जाती हैं, बट दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल इन पाकिस्तान टू। तो आई होप दैट एड्रेसेस बोथ द क्वेश्चंस। जी फिरोज साहब। Thank you, Rosab, for such a detailed answer and some insights as well. Shall we move on, or do you want to take more questions? आई एम हैप्पी विद टेकिंग द क्वेश्चंस, क्योंकि सारे सवालात मैंने जो स्लाइड जो बढ़ाने हैं, इससे बेहतर है कि आई टेक द क्वेश्चंस। और अगर कोई फीडबैक का मैकेनिज्म है तो पीपल कैन राइट इन दैट फीडबैक इफ दे वांट मी टू कवर दोज स्लाइड्स और इफ दे वांट मी टू एड्रेस दोज आंसर्स। Sure. जी। Okay. So the next question is from Jawadur Rahman, particularly based on ISOFR. He says, can you tell us about the ISOFR, how banks should adopt control frameworks? Which framework suits the current digitally disruptive environments? Like Bank of Khyber has adopted COSO framework. नाम क्या था इनका जिन्होंने सवाल पूछा? कैन यू प्लीज रिपीट द नेम? Jawadur Rahman. जवाद साहब देखें, ये जो कोसो फ्रेमवर्क है इसकी स्टेट बैंक ने गाइडलाइंस इशू की थी ICFR की 2003-4 2005-6 में। 2005-6 में आप समझ लेंगे गाइडलाइंस आई थी, और उसके बाद से 2007 से फिर इन्होंने कहा कि आपने 8 स्टेजेस हैं इसमें कोसो फ्रेमवर्क को या ICFR को इम्प्लीमेंट करना है, जिसके अंदर RCSAs, ICFR एज इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, उसकी इन्होंने लॉन्ग फॉर्म रिपोर्ट को मैंडेटरी कर दिया था। तो आज भी ICFR की टेस्टिंग होती ही है। अगर आप अभी लास्ट ईयर में एक कॉन्फ्रेंस में था, उसमें जो कोसो के चेयरमैन हैं ही वाज अवेलेबल, तो हमने उनसे कहा कि उनसे किसी ने सवाल पूछा कि आपने 2013 के बाद से अपना कोसो फ्रेमवर्क अपडेट नहीं किया। तो उन्होंने कहा हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने जो कोसो फ्रेमवर्क बताया हुआ है वो कंट्रोल इन्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटीज़, रिस्क असेसमेंट और पांचवा प्रोसेस भी है। इन 5 प्रोसेस बेस्ड है, और अगर आप किसी भी चीज़ को आज ब्रेक करेंगे, आज भी आप इन्हीं 5 प्रोसेस पे ब्रेक करेंगे। और फिर उसी कोसो फ्रेमवर्क को अगर आप सही से अप्लाई करते हैं, जो मैकेनिज़्म है कि हाँ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होनी चाहिए ह्यूमन एरर के पास, जहाँ टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करें वहाँ टेस्ट ऑफ वन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं कोसो फ्रेमवर्क के अंदर उसी तरीके से डिफाइंड है। तो आप जितना भी नया सिस्टम ले आएँ, अगर आपके प्रोसेसेस उसी तरीके से काम कर रहे हैं जिसमें आपने सारे के सारे लूप होल्स को आइडेंटिफाई कर लिया और उनको एड्रेस कर दिया है थ्रू control activities, whether it's manual, whether it's automated, you will be in a good shape to address all these things. तो इतना मसला होगा नहीं उसमें। तो मेरा ख्याल है that addresses your question. COSO framework is there. There are other frameworks as well. कोविड का फ्रेमवर्क हम टेक्नोलॉजिकल ऑडिट्स के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास और भी फ्रेमवर्क्स हैं डिफरेंट चीज़ों को ऑडिट करने के लिए, एंड दे आर ऑल गुड इनफ। स्टेट बैंक के बहुत ज़्यादा एंटरप्राइज रिस्क गवर्नेंस जो गाइडलाइंस हैं उसकी अगर आप देखेंगे तो दीज आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस एज वेल। इसी तरीके से अगर आप उनके फ्रेमवर्क्स देखेंगे, जैसे जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के हैं, दैट इज़ PCI DSS के जो फ्रेमवर्क्स हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन के, उनको हम फॉलो करते हैं। तो जहाँ पे जो चीज़ होती है उसको उसी हिसाब से फॉलो किया जाता है। बट कोसो फ्रेमवर्क फॉर ICFR इज़ वेल नोन। RBC में जो मेरा लास्ट एम्प्लॉयर था उधर भी हम यही यूज़ किया करते थे, कोसो का फ्रेमवर्क, एंड इट इज़ गुड इनफ। जी फिरोज साहब। Thank you, Roshan. The next question is from Yusuf Nampuri. He wants to ask, with many data security breaches which have surfaced recently in recent times, do you think digitalization of banking and financial services will always be considered less secure than conventional banking by general public? ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है यार। इस पे ना मेरे पास स्लाइड भी मौजूद है जिसमें मैंने बताने की कोशिश ये की है कि हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के रिस्क ना हमेशा रहते हैं। लेट मी शेयर द स्लाइड विद यू। ये देखें, अगर इफ़ यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन, ये सारी की सारी पाकिस्तानी
मैगजीन्स की है, न्यूज़पेपर की कटिंग है, बिजनेस रिकॉर्डर है, ट्रिब्यून है, द न्यूज़ है, और ये सारे के सारे जो हैं ये इनमें बात हुई हुई है कि हम जो है वो शायद डिजिटलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे. But on the same token, if you'll think about it, there is another slide which talks about कि हम digitalization पे तो चले जाएंगे, but on the same token, we are getting more and more exposed to privacy concerns. We are more and more exposed to cyber security risks. तो अगर मैं उस हवाले से आपको बताऊं तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि साइबर सिक्योरिटी रिस्क इज़ देयर टू स्टे. Every bank in the world, every organization, whether it's bank or not, जिसका भी system का access through digital forums होता है, digital means होता है, they are exposed to cyber security attacks. और ऐसा नहीं है कि ये attacks सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं या पाकिस्तान में हो सकते हैं. It happens across the globe. एक्विट्रैक का आप एग्जांपल ले लें, आप याहू का एग्जांपल ले लें, आप एशले मेडिसिन का एग्जांपल ले लें. There are so many things which has happened. आप फाइनेंशियल सर्विसेज में एक बांग्लादेश में काफ़ी बड़ा इस तरह का इंस्टांस है जो आप देख सकते हैं. पाकिस्तान में बैंक्स के साथ ऐसा कुछ हो चुका है जिसके अंदर आप उसकी एग्जांपल ले सकते हैं. सो दे आर सो मेनी थिंग्स. क्या हम ज़्यादा एक्सपोज हैं? बिल्कुल हम ज़्यादा एक्सपोज हैं. आप अगर प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे तो प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं. क्या हम जितनी ट्रांजैक्शंस आज कर रहे हैं, मैंने आज सुबह से लेके मेरा ख्याल है कोई 5 ट्रांजैक्शंस की हैं अपने बैंकिंग चैनल के अंदर. मैंने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की है, मैंने होटल बुक कराया है, मैंने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया है, मैंने रास्त के थ्रू एक पैसा ट्रांसफ़र किया है किसी को. तो अगर मुझे बैंक जाए और मैंने 5वीं ट्रांजैक्शन एटीएम से पैसे विड्रॉ किए, अगर मुझे पांचों ट्रांजैक्शन करने के लिए ब्रांच में जाना पड़ जाता, शायद मैं एक ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पाता, या एक कर लेता अगर कैश विड्रॉल की मुझे ज़रूरत होती. एटीएम में पैसे निकलवाना और ब्रांच से जाके टोकन लेके पैसा निकलवाना, यू नो द हैसल. तो हमें प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं. क्या हमारा कस्टमर दे आर विलिंग टू गो बैक टू द एनवायरनमेंट जहाँ पे हम दोबारा से विदाउट ऑनलाइन या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हम काम कर सकते हैं. देर आर कॉन्स कि हाँ शायद वो एक्सपोज हो जाए, बट वी आर टेकिंग मेजर्स. एवरी बैंक इज़ मेकिंग टेकिंग मेजर्स कि हम किस तरीके से इस चीज़ को मिटिगेट करें. देर विल ऑलवेज बी रिस्क. जब भी आप कोई भी चीज़ आपके पास गाड़ी है, देर इज़ अ रिस्क कि आपकी शायद एक्सीडेंट हो जाए, बट यू टेक दैट रिस्क. इसी तरीके से एवरी बैंक, एवरी फाइनेंशियल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव सो मच फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी, और वो इतना कुछ करते हैं. स्टेट बैंक इज़ फोकस्ड लॉट ऑन मेकिंग श्योर दैट साइबर सिक्योरिटी इज़ देयर. आप डिपॉजिट प्रोटेक्शन देख लें, वो वहाँ पे मौजूद है ताकि किसी के साथ अगर कोई बहुत बुरा हो जाए तो ये चीज़, इस तरह के मैकेनिज्म्स मौजूद हैं. इसके बावजूद भी हमारे पास अटैक्स होते हैं विच इज़ बिकम. पहले अटैक होता था साइबर सिक्योरिटी का तो वी वर मोर, वी यूज्ड टू टेक इट मोर कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो गई, इसको ऐसे फिक्स किया जाता है. अब नाउ वी स्टार्ट थिंकिंग प्रोएक्टिवली. हम होने से पहले सोच रहे होते हैं कि हाँ कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए. हमारे पास सपोर्ट मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर. बहुत सारे लूप होल्स हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जा रहे हैं. डेफिनेटली वी विल बी एक्सपोज टू, बट मेरा ख्याल है प्रोज एंड कॉन्स अगर आप देखेंगे तो यू वुड लाइक टू गो टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. और इसी के साथ मेरा ख्याल है द फोकस, सिग्निफिकेंट फोकस विल बी ऑन making sure we have mitigation factors available to reduce that risk. जी जी फिरोज साहब. Thank you, Rishabh. The next question is from Nakash. Uh, he's asking, can you please share some insights over the importance of IBM Cognos in banking sector? देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास. अभी हम कल ही एक सिस्टम में बैठे हुए बात कर रहे थे कि हम कौन कौन से सिस्टम्स हैं, कौन कौन से जगह पे हमें यूज़ करने चाहिए.
द इशू कम्स अप विद, जैसे पाकिस्तान में ओरेकल भी यूज़ होता है, T24 भी यूज़ होता है, माइसिस भी यूज़ होता है, TCS भी यूज़ होता है फॉर एज अ कोर बैंकिंग सिस्टम। इसी तरीके से हर जगहों के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। IBM के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, QRadar अभी हम यूज़ कर रहे हैं, मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स और भी नामों की दी। सो विच सॉफ्टवेयर इज़ बेटर, कौन से सॉफ्टवेयर के साथ हमें काम करना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, इट डिपेंड्स ऑन योर नीड्स, इट डिपेंड्स ऑन क्या आपका वेंडर से सूटेबिलिटी बनती है। अ लॉट ऑफ पीपल फील कंफर्टेबल विद वन वेंडर एंड अ लॉट ऑफ पीपल फील्स कंफर्टेबल विद अनदर वेंडर। फिर अभी जो मैं बात कर रहा था चैलेंजेस के साथ कि ट्रांसफॉर्मेशन में मसला ये होता है, आप एक चीज़ के ऊपर पैच लगा के दूसरा सॉफ्टवेयर अटैच करते हो। अगर आपके पास सारे सॉफ्टवेयर IBM के चल रहे हैं तो इट विल मेक योर लाइफ ईजियर। बट अगर आपके पास बाकी सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं ओरेकल के और आप एक IBM का लगाएंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। इसी तरीके से अगर आपके पास सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इस तरह सिंक्ड हैं कि data flows very easily without a lot of disruption, that would be the ideal situation. जी फिरोज सर। Thank you, Ravi Saab. I think we have answered all the questions. ज़बरदस्त हो गया। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू द स्लाइड डेक और मैं क्विकली जो है अब आप लोगों को कवर करा देता हूँ कि व्हाट आर द एरियाज जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। दिस इज़ द स्टार्टअप थिंग्स विच वी वर टॉकिंग अबाउट। ये अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि पाकिस्तान में हमने पिछले साल Q1 से लेके अभी तक अगर आप देखेंगे तो हमने कितना ज़्यादा फंडिंग रेज की है। इट मीन्स अ लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान आर looking value in bringing this startup focusing on Pakistan. A lot of venture capitalists are investing money in Pakistan, which is from Pakistan's perspective is very good, but I think there is a long way to go. अभी भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें काम करना चाहिए। फिनटेक पे आते हैं। व्हाट इज़ फिनटेक? अगर आप नीचे देखेंगे बॉटम में आपको सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, फ्रॉम ब्लॉकचेन टू पेमेंट टू एक्सचेंज टू रिसर्च टू डिजिटल मनी टू ऑनलाइन बैंकिंग टू इन्वेस्टमेंट्स टू क्राउड फंडिंग। ये सारी चीज़ें जो हैं दीज आर सम कंपोनेंट्स ऑफ फिनटेक। फिनटेक में अभी तक सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है वो पेमेंट साइड पे हुआ है। आप पेपैल से उठा लें, आप NFC देख लें, आप अभी पाकिस्तान में पे पैक की जो सर्विस आई है टू चैलेंज वीज़ा एंड मास्टर कार्ड वो देख लें। आप ये जो मैं अभी मोबाइल वॉलेट्स की बात कर रहा था, दे आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर द मोस्ट पार्ट फॉर पेमेंट। आपने QR कोड्स देखे होंगे डिफरेंट बैंक्स के, डिफरेंट मोबाइल वॉलेट्स के जो आ रहे होते हैं, वो भी पेमेंट साइड पे है, उसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ है। दूसरा ज़्यादा काम ऑनलाइन बैंकिंग पे हुआ है। एवरी बैंक यू डू बैंकिंग विद have online platforms. Some are more complicated, some are more complex, some are more trustworthy in the sense they have more features available, some have less features available, but these are the things which are already there. Investments पे शायद हमारे पास अभी रोबो एडवाइजर्स और इस तरह की चीज़ें तो नहीं आई हैं, बट स्टिल दे आर थिंग्स विच आर अवेलेबल। अभी मैंने रिसेंटली एक CDC के साथ अकाउंट खुलवाया है विदाउट गोइंग ऑन टू द ब्रांच। पूरा का पूरा अकाउंट जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑनलाइन उन्होंने खोला। भी कोई सवाल भी पूछ रहा था डिजिटल कस्टमर ऑनबोर्डिंग के हवाले से, तो हम वो कर सकते हैं। डिजिटल मनी जो क्रिप्टो करेंसी की हम बात करते हैं, बिटकॉइन है, यूथेरियम है, डॉजी कैश है, ये सारे के सारे मौजूद हैं हमारे पास। ब्लॉकचेन पूरा का पूरा हमारा एक सेशन मौजूद है ब्लॉकचेन के ऊपर, विल बी टॉकिंग अ लॉट अबाउट दैट। रिसर्च और एक्सचेंज पे भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और यू विल सी अ लॉट मोर। मैं भी नेक्स्ट स्लाइड्स में जाके इन पे बात भी करता हूँ। व्हाट इज़ फिनटेक? मेरा ख्याल एवरीबडी नोज, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को जहाँ हम मिला लेंगे वो आ जाएगा। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो नज़र आएगा आपको कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दीज थिंग्स। फिनटेक के कुछ नंबर्स हैं। अगर आप पहले देखेंगे तो जो मार्केट्स लार्जेस्ट सेगमेंट विल बी डिजिटल पेमेंट्स, जैसे भी मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि डिजिटल पेमेंट्स का ये वॉल्यूम है। अगर आप इसमें पाकिस्तान का वॉल्यूम देखें तो पाकिस्तान का वॉल्यूम 8000 मिलियन है डॉलर्स में, कि 8 बिलियन डॉलर्स की हम ट्रांजेक्शन्स का डिजिटल पेमेंट्स का। अगर आप US की या चाइना की देखते हैं तो यू कैन इमेजिन कि वो बिलियंस में उतनी है। सो वी आर इन अ
we are far behind in those transactions. अगर आप lending भी देखेंगे तो we are at a very low number जहाँ पे हमारे पास volume है, और revenue growth भी अगर आप देखेंगे तो digital investment sector में हमारे पास growth मौजूद है because we are at a very infancy stage right now. फिनटेक के क्या यूजेस होते हैं, पेमेंट्स है, मैंने नीचे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, पेपल है, स्क्वायर है, इसी तरह लेंडिंग में क्रेडिट कर्मा है, दीज आर सम ऑफ द फिनटेक्स जो कि हमारे पास मौजूद हैं। इंश्योर के भी मैंने लेमिनेट की, स्लाइस की, मैनी लाइफ वाइटैलिटी की एग्जांपल्स दी थी। किसी ने इंश्योरेंस पे सवाल पूछा था। ब्लॉकचेन पे भी हम बात करेंगे। रोबो एडवाइजर्स जो है हमारा, जो BFSI में एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि म्यूचुअल फंड्स का है। पाकिस्तान में इसमें बहुत काम होना बाकी है, शायद एक एक अनटैप्ड मार्केट मौजूद है रोबो एडवाइजर्स की जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। अभी एक दो कंपनीज आई थी, स्टेट बैंक ने उनको बाद में बैन भी कर दिया था, बट दिस इज़ द एरिया वेयर वी कैन डू सम गुड स्टफ। अभी ये बजटिंग एप्स पे बहुत ज़्यादा, ये वो बजटिंग एप्स जो हैं, ये वो जो मैं अभी बात कर रहा था कि आपको लिंक करना पड़ता है एक दूसरे के साथ, that is very difficult कि आप बजटिंग ऐप को मिक्स कर सको अपनी बैंकिंग ऐप के साथ। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अभी जो है, मैं सपोज करें मैं अपने मोबाइल ऐप पे ABC बैंक की पेमेंट्स कर रहा हूँ, उसमें क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स भी आ रही हैं। अब मैं अगर PSO पे जाके या शेल पे जाके जब क्रेडिट कार्ड को यूज़ करता हूँ, तो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द मंथ, दे शुड बी एबल टू टेल मी कि आपने जो है वो इस बजटिंग ऐप पे इतने का फ्यूल डलवाया है और इतने पैसे आपने इंटरटेनमेंट पे खर्च किए हैं, इतने पैसे आपने फूड पे खर्च किए हैं। दिस वी यूज्ड टू डू इन 2018 इन कनाडा। पाकिस्तान में भी इस पे काम हो रहा है। हिसाब किताब एक ऐप मैंने यूज़ किया है, यूज्ड इट, बट मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी तो मैंने आई हैड टू लेट इट गो, बट देयर आर सम थिंग्स व्हिच वी आर वर्किंग ऑन। तो ये चीज़ें मौजूद हैं फिनटेक वर्ल्ड के अंदर। दीज आर सम ऑफ द फिनटेक्स, फिनटेक इकोसिस्टम की जो हम बात करते हैं। इफ़ यू जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल्स इन ईच ऑफ द एरियाज, इंश्योरटेक्स की जो आप बात कर रहे थे वो मौजूद हैं, ब्लॉकचेन की बात हम कर रहे थे, पेमेंट्स की हम बात कर रहे थे, वो सारी आप टॉप राइट पे देख सकते हैं। डिजिटल बैंक्स की हम बात कर रहे थे, ये सारे डिजिटल बैंक्स दुनिया में मौजूद हैं ऑलरेडी। फिर रेगुलेटरी टैक्स हैं। रेग टैक्स इज सच अ बिग इंटरेस्टिंग एरिया जिस पर अभी तक हमने बात नहीं की। वेरी इंटरेस्टिंग। इतना काम हो सकता है पाकिस्तान में रेगुलेशंस के ऊपर, बिकॉज वी हैव ह्यूज डाटा अवेलेबल विद नादरा, अगर हम उसको किसी तरीके से यूज़ कर सकें फॉर हेल्पिंग आवर कस्टमर्स बाय मेकिंग श्योर कि हम सारी रेगुलेशंस को कंप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डाटा, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें होता ये है रेग टैक्स के अंदर कि ये आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे आपने कहा कि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो सारे के सारे 18+ हों। हमारे पास CNIC होता है, उसके थ्रू हम भी मेक श्योर कि हाँ हमारे पास सारे कस्टमर्स जो हैं बैंक के वो 18+ हैं। बट अगर ये डाटा कोई रेग टैग कंपनी प्रोवाइड करे और वो बोले कि अच्छा, जैसे आई गिव एन एग्जांपल, अगर पेप है, आपके पास पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, MNAs MPs जो होते हैं, दे नीड अ लिटिल बिट मोर इनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस, जिसका नाम हम यूज़ करते हैं। अगर कोई एक रेगुलेटरी टेक कंपनी, रेग टैग कंपनी बता दे कि मैं आपको बता सकती हूँ कौन कौन से रेग टैग क्लाइंट्स हैं, जैसे सेफ वॉच का आपने नाम सुना होगा, इट्स अ सर्विस विच टेल्स यू कि हाँ ये लोग हैं जिनके नाम ब्लैक लिस्टेड हैं, या इनके नाम जो हैं वो रेड बुक में आ रहे हैं और इनको आपके साथ ट्रांजेक्शन नहीं करनी चाहिए। These type of organizations we have a lot to do in this area. रोबो एडवाइजर्स की भी मैंने बात की, जिसमें हम एडवाइस दे सकते हैं कि दिस इज़ द राइट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये भी उसी तरह का एक और स्लाइड है जिसके अंदर हमने इंश्योरटेक की बात की हुई है, P2P लेंडिंग की बात की हुई है, ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की बात की हुई है। तो दिस इज़ अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। ये फिनटेक की लाइफ साइकिल है फ्रॉम, जस्ट गिव मी अ सेकंड। फिनटेक किस तरह शुरू होती है, फ्रॉम द आइडिया टू डेवलपमेंट टू एंटरिंग द मार्केट एंड स्केलिंग एंड टू मैच्योरिटी। जब फिनटेक मैच्योर होने लगती है तो दे गो बैक टू डेवलपमेंट अगेन, or going back to problem identification of area where should we be focusing on. This is not something which is very unique. This happens in
any of the products, but fintech में क्योंकि scalability जो है that is the main area, आपको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा स्केल करना पड़ता है, तो इसलिए फिनटेक की लाइफ साइकिल में बहुत ज़्यादा प्रोटोटाइप वाली साइट से आपको मूव ऑन होना पड़ता है बहुत क्विकली. दीज आर सम ऑफ द अगेन डिजिटल लैंडिंग मौजूद है, डिजिटल कैपिटल रेजिंग, क्राउड फंडिंग जिसे आप कहते हैं वो मौजूद है, डिजिटल बैंकिंग आप सबने देखी हुई है, डिजिटल सेविंग्स हैं, डिजिटल पेमेंट्स हैं, डिजिटल एसेट एक्सचेंज है, डिजिटल कस्टडी है. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. डिजिटल कस्टडी जो है आप लोगों ने देखा होगा कि लॉकर रूम्स अवेलेबल होते हैं हर बैंक्स में, बट अगर आपको एक सेंट्रलाइज लॉकर रूम फैसिलिटी मिल जाए जो कि पूरी की पूरी डिजिटल हो, देन दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. इसी तरीके से डिजिटल कस्टडी के अंदर अगर आपके पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं बैंक्स के पास पिछले 20 साल के, 25 साल के, 50 साल के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और आप उनको कहते हैं कि उन सब की हम आर्काइविंग करना चाह रहे हैं, उनकी डिजिटल कॉपीज़ बनाना चाह रहे हैं, वी शुड बी एबल टू स्टोर इट डिजिटली. इंश्योरटेक की हमने बात की है, वेल्थ टेक जिसको हम अभी एसेट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी रोबो एडवाइजर्स की बात कर रहे थे वो है, रेगटेक की हमने बात की है, 11 पे डाटा एनालिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, डिजिटल आइडेंटिटी की अभी हमने बायोमेट्रिक्स की बात की है. बायोमेट्रिक्स के अलावा जाहिर है कि वॉइस कमांड भी आ सकती है या फेस स्कैनिंग भी आ सकती है, और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी प्रोविजनिंग, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी बैकअप, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी हम बात कर सकते हैं. राइट साइड पे जो आ रहा है ये स्टेट बैंक ने कुछ चीज़ें बताई हैं, ये स्टेट बैंक की वेबसाइट से हमने चीज़ उठाई है जिसमें ब्रांचलेस बैंकिंग की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, आउटसोर्सिंग कंपनीज की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं. दिस इज़ ऑल द एग्जांपल्स आर फ्रॉम पाकिस्तान. इन्फोमेट्रीज की हमने बात की हुई है जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं. डिजिटल लैंडिंग में हमने बात की हुई है, एग्जांपल्स दी हुई हैं कि किस तरह डिजिटल लैंडिंग हो रही है, और डिजिटल पेमेंट्स में किस किस तरीके से हम काम कर रहे हैं. दीज आर सम ऑफ द फिनटेक एप्स इन पाकिस्तान. मेरा ख्याल है एवरीबडी नोज. राइट साइड पे बॉटम पे जो मैं हिसाब किताब और आपको बता रहा था वो लिखी हुई आ रही हैं. डिजिटल लैंडर्स की आ रही हैं, फर्स्ट जनरेशन एप्स, सिर्फ एप्स जो हैं वो आ रही हैं. चैलेंजेस ऑफ फिनटेक, दिस इज़ इंटरेस्टिंग. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिनटेक में है ये कि यू आर लुकिंग एट द ब्लू स्ट्रेटजी, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, कि हाँ कौन कौन सी अनटैप्ड मार्केट है, कौन कौन से एरियाज़ हैं जिस पे आपको काम करना चाहिए. बट द इशू कम्स अप के इकोसिस्टम शायद अवेलेबल ना हो, शायद लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो टेक्नोलॉजी की, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. जैसे अगर आपने ऐप बनाई और आपने इंग्लिश में ऐप बना दी तो आधे पाकिस्तान को तो समझ में आएगी नहीं वो ऐप, आपको जाके उसको उर्दू में बनाना पड़ेगा. एंड दैट इज़ द वे इट शुड बी. लोकल लैंग्वेज के अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऐप या अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक चीज़ों की किस तरीके से वो रन होगा, किस तरीके से मुझे चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, दैट हेल्प्स, दैट क्रिएट्स अ चैलेंज. लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इशू विद पाकिस्तान. आपको पता है कि डॉक्यूमेंटेशन, I wrote an article last year on this because I think in one of the magazines मेरा ख्याल है कि documenting the undocumented economy is very difficult. A lot of people feel like अगर हम banking system में आ गए, which they will through fintech, then it will be very difficult. They'll be taxed left, right, and center, and they try to avoid that. Over regulation, this is one of the key area जिस पे भी हमने बात नहीं की. fintech का सबसे बड़ा challenge जो है ना वो regulations है. आपके पास compliance department होना चाहिए, आपके पास risk management department होना चाहिए, आपके पास ABC department होना चाहिए. There are so many requirements जो उनको पूरी करनी पड़ती हैं. Next one is partner. Very very interesting. Financial services industry may not want to partner with you. अभी हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी पिछले स्लाइड्स के ऊपर जिसमें जैसे भी मैंने एक एग्जांपल दी बजटिंग ऐप की. बजटिंग ऐप अगर आपके साथ लिंक हो जाएगी आपकी ऐप के साथ तो दैट विल हेल्प द कस्टमर्स ऑफ द बैंकिंग ऐप. बट बजटिंग ऐप वाले को चाहिए कुछ फंडिंग और उसके लिए उसको चाहिए अ बिग बैंक जो कि उसको सपोर्ट कर सके. While we were in my last employer, we had a lot of similar apps which we built into our RBC app because we knew कि हाँ ये हमारे customers को support करेगी. But if you don't find the partner, a lot of fintech apps just die because it's very difficult to operate from the beginning. Talent, HR is a very big problem.
फाइंडिंग द राइट टैलेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हमें अंदाज़ा नहीं होता पाकिस्तान जैसी इन्वायरमेंट में, बट फाइंडिंग द राइट टैलेंट इन पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के अंदर, इफ़ आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ अपनी इंटरनल ऑडिट के अंदर, एंड for me, finding the technological guy in Karachi is so difficult that most of my hiring is in Lahore and Islamabad. From HPL perspective, we can do that, but a lot of fintechs, it may not be very feasible for them कि वो hire करें वहाँ पे जाके बंदों. They don't have big pockets as well to hire the right resource. फंडिंग इकोसिस्टम, वेंचर कैपिटल्स का होना और इस तरह की फंडिंग आना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. अभी हमने जो फंडिंग देखी, बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है पाकिस्तान में, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो. जी, अकाउंटेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं फिनटेक में? जो स्टार्टअप्स में जो लोग अकाउंटेंट्स के तौर पे काम करते हैं, दे आर नॉट ओनली अकाउंटेंट्स बट दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. एचआर का काम भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, आईटी भी कुछ हद तक देखते हैं, और जो सारे काम हैं टैक्स प्लानिंग से लेके बुक कीपिंग से कैश प्लानिंग से. कैश प्लानिंग इज़ वेरी वेरी की एरिया ऑफ फिनटेक, क्योंकि कैश प्लानिंग इज़ एवरीथिंग. ये कुछ और चीज़ें हैं, ये CPA क्या है, CPA US से ली हुई हैं, तो डाटा इज़ फ्रॉम देयर. किस तरीके से लोग हायर करते हैं अकाउंटेंट्स को, यू कैन सी दैट 60% ऑफ द टाइम इट इज़ बेस्ड ऑन रेफरल्स. And most of the time they do have advisory services as well. So in outside of Pakistan, they just don't hire accountants, they just do part-time accountants that एक घंटा 1.5 घंटा रोजाना काम करो हमारे पास, और हफ्ते में 2 दिन के लिए आप आओ और सर्विसेज प्रोवाइड करो एंड देन गो. इस तरह की बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स फ्रीलांसिंग के वहाँ पर. ये मेन स्किल्स हैं जो आपको चाहिए. EI EQ जिसे आप कहते हैं, इमोशनल क्वोशेंट, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल. कम्युनिकेशन आपके पास होनी चाहिए, टेक सेवीनेस आपके पास होनी चाहिए, बिजनेस पार्टनरशिप. Very interesting, very if you read the slide you will be able to see flexibility is one of the key things. जैसे मैं आपको बताऊं कि फिनटेक के पास अगर फंडिंग आ रही है US से, तो दे वुड लाइक कि आप US की टाइमिंग के मुताबिक काम करो, ताकि वहाँ पे अगर हमारी मीटिंग हो रही है रात को 10 बजे, जब वहाँ के सुबह के 12 बज रहे हैं या दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो यू विल हैव टू वर्क एट दैट टाइम. तो वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. जो फिनटेक है उसमें वैल्यूएशन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. इट्स नॉट जस्ट डूइंग द फाइनेंशियल प्लानिंग, फोरकास्टिंग प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं. कैश प्लानिंग करना इज़ नॉट दैट ईजी. स्ट्रेस टेस्टिंग करना, हम कहाँ पे कैश आउट हो जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है इतने परसेंटेज पॉइंट से, तो हम कितने, हमारे पास कैश मौजूद है. उसके अलावा वैल्यूएशन करना, अपनी कंपनी की वैल्यूएशन करना, बिकॉज अ लॉट ऑफ फिनटेक्स दे आर नॉट अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, और उनकी कस्टमर यूजेज के ऊपर कि हाँ इतने लोग हमारे पास एक्टिव यूज़र्स हैं, उसकी बेसिस पे वैल्यूएशन करना और उसकी बेसिस पे आइडेंटिफाई करना, विल बी एबल टू अर्न रेवेन्यू. दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. So this is an important slide and we should all be focusing on that. Communication, oh man, it's the key to any job. ये फिनटेक की अडॉप्टेबिलिटी के ऊपर हमने बात की है. List of fintech companies in Pakistan. जी, Feroz, again I would like to go back if we have any question available. Yes, Raghusab, we have a question from Salman Says. He's asking, we have branchless banking, EMIs, etc., but still we do have very less financial inclusion as compared to regional countries. Do you think that ecosystem APIs are not very mature and is very weak, such as central KYC registry, linkage between NADRA, SECP, and SBP systems? नहीं यार, मेरा नहीं ख्याल इसकी ये वजह है. और अगर आप देखोगे तो ग्रोथ इज़ ट्रेमेंडस. ऐसा नहीं है कि ब्रांचलेस बैंकिंग के अंदर काम नहीं हो रहा या फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ वेरी लो, बट अगर आप ग्रोथ देखोगे पिछले 5-7 सालों में,
ख़ास तौर पे कोविड जब आया है तो a lot of technology company took benefit of that. जो ई कॉमर्स हमारी अब होती है, फूड पांडा देख लो, आप दराज देख लो, या बाकी दराज जैसी दवाई डॉट पी के हमारे पास मौजूद है, या इस तरह की जितनी भी वेबसाइट, इस तरह की जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, दे आर वर्किंग वेरी गुड. और अगर BFSI पे इसको देखो, आप सिर्फ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स का वॉल्यूम देखो, इट हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली. अभी हमने जो चैलेंजेस फिनटेक के पिछले उस पे स्लाइड पे देखे, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इकोसिस्टम नहीं है, जहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे थे, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. इन द बैंकिंग सिस्टम हम एक बहुत बड़ा हमारे पास चंक आता है विच ओनली कम्स फॉर वन ट्रांजेक्शन. आपके पास इनहेरिटेंस की मनी आई या आपने घर बेचना है, यू जस्ट डू द ट्रांजेक्शन वंस. आपके पास कैश आया, आपने अकाउंट खुलवाया, कैश लिया, आपने कैश को मतलब अकाउंट में जो पैसा आया उसको कन्वर्ट कराया कैश में, यू नेवर कम एंड वर्क ऑन दैट अकाउंट अगेन. इसी तरीके से हमारे पास जो ये है, जो कारोबारी तबका है, दे फील वेरी वल्नरेबल, वेरी कि अगर इनको डॉक्यूमेंटेशन हो गई तो शायद इनको बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा. फिर एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ जो इस्लामिक बैंकिंग ने आके चीज़ों को एड्रेस किया है, देयर वाज अनदर कॉन्सेप्ट कि हम शायद बैंकिंग नहीं करेंगे. तो ऐसा नहीं है कि ब्रांचलेस बैंकिंग जो है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स एज ऑफ, आई थिंक यू आर राइट, आवर नंबर एज ऑफ द बैंकिंग सर्विसेज इज़ लो, बट ब्रांचलेस बैंकिंग और इन सब चीज़ों के आने की वजह से जस्ट मतलब मुझे नहीं पता हाउ मेनी पीपल यू have seen using ये जो मोबाइल वॉलेट्स हैं इनको, बट माइक्रो फाइनेंस बैंक की जो मोबाइल वॉलेट्स हैं, लॉट ऑफ दीज पीपल यूज दिस सर्विस. मतलब ड्राइवर्स को आप देखो, ये जो आपके पास आते हैं TCS वाले या ये जो करीम वाले, ये इनसे अगर आप देखोगे इनको, तो दे यूज अ लॉट ऑफ ब्रांचलेस बैंकिंग फैसिलिटीज, एंड दिस इज द विन फॉर पाकिस्तान. तो डायरेक्शनली वी आर इन द राइट डायरेक्शन. फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बहुत काम हो रहा है और आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन दैट सेक्टर. शायद हमारी जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो सारी चीज़ें हैं ये ठीक हो जाएं. जैसे डे बिफोर यस्टरडे इन कराची देयर वाज नो सर्विस, देयर वाज नो मोबाइल सर्विस फॉर सम रीज़न. तो सैटरडे के दिन यू एक्सपेक्ट कि आप ट्रांसफ़र कर रहे होगे, बट यू कैन नॉट डू इट. इसी तरीके से जब आपकी ऐप चल रही होती है और चलते चलते OTP आपके पास नहीं आता, तो these are some of the issues, but मेरा ख्याल है directionally we are in the right direction, or you will see that in few years, in couple of years we will do a lot on that. जी फिरोज. Thank you, Raghusab. I think we're done with the questions for now. You can move on. ज़बरदस्त. इसका मतलब है कि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ या तो किसी की समझ में नहीं आ रहा या जो है सब समझ में आ रहा है. दो ही वजूहत हो सकती हैं सवाल ना पूछने की. जब किसी की समझ में ना आ रहा हो तो उस वक्त भी देयर इज़ अ प्रॉब्लम, और सब समझ में आ रहा हो जब भी प्रॉब्लम है. यू हैव टू स्टार्ट we have to start making these type of webinars more interactive. और जितना ज़्यादा आप सवाल पूछेंगे उतना ज़्यादा it will benefit others as well. जी, moving on to the last topic for today, which is related to big data. और डेटा एनालिटिक्स से हम जो बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है आई गेव यू अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड ऑन बिग डाटा व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. और मैंने कहा कि हमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है हमारा वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में डाटा पे रिलायंस होती है. और जब मैं बता रहा था आपको कि मशीन लर्निंग में जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 0 से 1 की तरफ जाते हो, तो यू नीड सो मच ऑफ डाटा टू बेसिकली कम टू द लेवल जहाँ पे आप एक्यूरेटली डिफाइन कर सकोगे क्या चीज़ हमें चाहिए. तो व्हाट इज़ बिग डाटा? बिग डाटा इज़, हमने हमेशा, बिकॉज वी आर ऑल फाइनेंस प्रोफेशनल्स, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ अस आर ऑल फाइनेंस प्रोफेशनल्स लिंक्ड विद फाइनेंस. हमने ACC में बहुत ज़्यादा डिटेल में फाइनेंस और अकाउंटिंग पढ़ी होती है. तो वी ऑलवेज गो विद द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ के शायद फाइनेंशियल नंबर्स आर द मेन थिंग्स, लेकिन जो बिग डाटा में हम चीज़ें देखते हैं वो दैट गोज़ अबव एंड बियॉन्ड दैट.
हमारे पास इतना डाटा आता है बैंकिंग के अंदर. I think we are one of the biggest users of data. We are the one of the biggest producers of data as well. हर चीज़ जो है हमारी वो डाटा ड्रिवन होती है, और मैच्योर कंट्रीज़ के अंदर ये डाटा जो है इसको हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से यूज़ भी करते हैं. एक कस्टमर आया, उसने ब्रांच में दाखिल हुआ, उसने जब टोकन लिया उस वक्त से लेके उसकी ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट हुई, that time tells you something. You have to record that time. उसने ये ट्रांजैक्शन की, जैसे हमारे पास सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जो होती हैं बैंकिंग वो 5 तारीख से लेके 25 तारीख से लेके 5 तारीख तक होती हैं. तो इट टेल्स यू कि हाँ आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके का डाटा मौजूद होता है. हमारे पास सबसे ज़्यादा जो कैश विड्रॉल्स होती हैं एटीएम में वो लॉन्ग हॉलीडेज़ पे होते हैं, ईद की या बकरीद की छुट्टियों के अंदर. तो these type of data which are available not only in the financial terms but also in the terms जैसे time कितना consume किया उसने, what is their pattern of spending the money, which has nothing to do with the money they are spending on, but what is the pattern, किस तरीके से वो spend करते हैं. इसी तरीके से भी हम बात कर रहे थे कि जो needs हैं एक user की, जैसे आपने देखा है बहुत सारे जो डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स हैं, दे ऑफर यू डिस्काउंट ड्यूरिंग हॉलीडेज या ड्यूरिंग ऐसे टाइम्स पे जब आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ वी नीड दैट. अभी बहुत सारे बैंक्स की आप देखते हैं कि डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन्स आ रही होती हैं बेस्ड ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. वो सारा का सारा डाटा जो है वो बिग डाटा के थ्रू आता है. अभी बहुत सारे बैंक्स ने व्हाट्सएप मैसेजिंग के थ्रू बैंकिंग शुरू कर दी है. बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो आप जो फ़ोन बैंकिंग के थ्रू कर रहे होते हैं वो सारा का सारा डाटा, वी गैदर दैट डाटा, जो रिव्यूज़ आते हैं BFSI में या फिर जो रिव्यूज़ आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप उसको BFSI में जिस तरह यूज़ करते हो कि कौन सी चीज़ हमारे पॉजिटिव जा रही है कौन सी चीज़ नेगेटिव जा रही है, दैट ऑल गोज़ इनटू बिग डाटा. फिरोज कैन यू हेयर मी? मेरे पास कुछ क्लीनिंग वाले लोग आए हैं तो अगर उनकी आवाज़ ज़्यादा है तो आई कैन टेल देम के they can do it later on, but if you can hear me loud and clear then it's okay. Yes, I think your audio is perfectly fine. ठीक हो गया, ठीक हो गया. तो हम डाटा एनालिटिक्स के ऊपर बात कर रहे थे कि डाटा एनालिटिक्स के अंदर व्हाट इज़ डाटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन. ये जो है हम बैंकिंग में जिस जगह पे डाटा एनालिटिक्स को यूज़ करते हैं, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डाटा एनालिटिक्स. विकीपीडिया की एग्जांपल है, गार्टनर की एग्जांपल है, leverage data in a particular functional process or application to enable context specific insight that is actionable. Data visualization and visual data, context of data, dashboards. These are all data analytics definition. ये कुछ benefits हैं जहाँ पे हम डाटा एनालिटिक्स को यूज़ करते हैं. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे मैंने कहा कि डाटा का बहुत ज़्यादा इनपुट है. डाटा की बेसिस पे आपकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बेहतर भी हो जाती है और डिसीजन मेकिंग भी बहुत आसान हो जाती है. आपको पता होता है जैसे हम ऑडिट में, आई टेल यू कि हमारी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है डाटा की वजह से, बिकॉज वी डोंट हैव टू आर्ग्यू ऑन एनीथिंग. फैक्चुअली डाटा हमें बता देता है कि ये सैम्पल साइज़ है, ये एरर रेट है, एंड देन वी जस्ट गो बेस्ड ऑन एरर रेट के इस पे हमने ये ऑब्जर्वेशन रेज करनी. इसी तरीके से डाटा एनालिटिक्स के अंदर सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आता है वो पॉपुलेशन का आता है. इंस्टेड ऑफ जस्ट बेसिंग योर डिसीजंस ऑन सैम्पल, यू आर बेसिंग योर डिसीजन ऑन पॉपुलेशन. प्रेडिक्टिव मॉडलिंग बड़ी अच्छी हो जाती है. जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि IFRS 9 में जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट निकालते हो, आपको पता होता है कि हाँ इस सिचुएशन में इतने लोगों ने डिफ़ॉल्ट किया था स्ट्रेस टेस्टिंग के थ्रू. तो दिस ऑल कैन बी डन थ्रू वेरी इजीली विद प्रेडिक्टिव मॉडलिंग. मार्केट कंडीशन समझने में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है. इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, ट्रेंड्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. इसी तरीके से जो हमारा ऑपरेशनल डाटा है वो बहुत ज़्यादा हमें एफिशिएंसी की तरफ लेके जाता है कि दिस इज़ हाउ यू मैनेज इट. जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा, अगर ट्रांजैक्शंस की हम बात करें कि हाँ जो सैटरडे के 4 घंटे होते हैं 10 से 2 बजे तक, उस दिन सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस का प्रेशर होता है हमारे पास.
तो इस तरह की चीज़ें आपको पता है कि हाँ, इसका मतलब है कि आप अपनी टीम को संडे मंडे या फिर मंडे ट्यूसडे छुट्टी दे के सैटरडे को आपके पास पूरा स्टाफ होना चाहिए. These type of efficiency and productivity gains, they help a lot. और इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपको वंस यू गेट टू नो कि आपके पास कहाँ पे कस्टमर की डिमांड ज़्यादा आ रही है, देन यू डेवलप योर प्रोडक्ट. जो हमारी एक स्ट्रेटजी होती है, जो मैं भी आपको बता रहा था कि कुछ स्पेशल चीज़ों के ऊपर जब हमें पता चलता है कि कस्टमर डिमांड यहाँ पे आ रही है, तो वी क्रिएट प्रोडक्ट्स फॉर देम. तो वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. These are types of data analytics. डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हैं जो कि अभी हम करते हैं. ट्रेंड्स बनाते हैं, रीजंस फॉर वेरिएशन लिखते हैं, कस्टमर पैटर्न्स बनाते हैं. फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक्स हैं हम, जिसमें बताते हैं कि ये अगर ऐसा हुआ था तो इसकी वजह से ऐसा हुआ है. मोस्टली वी डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स मेरा ख्याल है हम सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेवल तक भी कर रहे होते हैं. डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स जो है वो हम जो BI टूल्स, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल यूज़ करते हैं, जैसे कि पावर BI वगैरह, उस तरह की चीज़ों में हम कर रहे होते हैं. तो उसकी वजह से हमें डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स मिल जाते हैं. हाउ डू यू डू द डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स? आप इसकी बेसिस पे ये करते हो कि जैसे हम सैंपल पिक करते हैं अपना. जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, मैं ज़रा, ये पीछे से आवाज़ आ रही है, इसको बंद करवा दूँ. Sure. Sorry, my apologies for that. The thing which I was telling is diagnostic analytics के अंदर आप बात कर रहे होते हो कि based on the areas which you are focusing on, आपने एनालिसिस किया कि अगर एक कस्टमर है और उसके पास इतने ज़्यादा जैसे कैश ट्रांजैक्शंस इतनी ज़्यादा हो रही हैं, तो दे आर नॉट द सैलरीड पर्सन, दे आर डूइंग सम बिजनेस. सो दिस टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, यू रन फ्यू सैम्पल्स. अगर किसी का क्रेडिट टर्नओवर जो है वो इतना ज़्यादा आ रहा है और उसकी सैलरी स्लिप इतनी है, तो यू गेट टू नो कि हाँ, इसमें कुछ मसला है, लेट्स हैव अ लुक एट इट. तो जो डायग्नोस्टिक्स होते हैं ना, कि बेस्ड ऑन सर्टेन आउटपुट्स यू आइडेंटिफाई कि हाँ, ये मसला हो सकता है इसके अंदर, और उसकी बेसिस पे आप प्रोब करते हो, उसकी बेसिस पे आप फर्दर इवेलुएट करते हो. दोज आर डायग्नोस्टिक्स. उसके बाद प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है. प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स आपने देखा होगा अक्सर जब आप पाकिस्तान का मैच देख रहे होते हैं क्रिकेट का, तो यू गेट टू सी कि हाँ, पाकिस्तान की विन प्रोबेबिलिटी इतनी है और दूसरी कंट्री की विन प्रोबेबिलिटी इतनी है. दैट इज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स बेस्ड ऑन द फैक्टर्स विच दे हैव इंसर्टेड कि हाँ, ये टीम प्लेयर खेल रहा है, ये टीम प्लेयर इतना फॉर्म में है. सो इसमें मल्टी वेरिएंट एनालिसिस हो रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ बाई वेरिएंट, जो आप डायग्नोस्टिक के अंदर करते हो. तो जो मल्टी वेरिएंट है, इसके अंदर आप पास्ट की बेसिस पे फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हो. जैसे कि अगर इतना टेम्परेचर हो गया कैलिफोर्निया के अंदर, तो फिर इसमें जो है फॉरेस्ट फायर लगेगी लगेगी. तो क्योंकि वहाँ पे आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो ये जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है, मेरा ख्याल है वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान आर गेटिंग टू द लेवल जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स करती हैं. अभी तक हम जो है वो डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स की तरफ हैं. और प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स तो मेरा ख्याल है कि दैट इज़ मशीन लर्निंग एंड दैट इज़ वन स्टेप अहेड. जो AI की हम बातें करते हैं, ये जो है बहुत सारे प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, बहुत सारे वेरिएंट्स को मिला के और बहुत सारी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल चीज़ों को मिला के हम करते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. दीज आर सम ऑफ द टूल्स. अभी जिस तरह हमने बात की थी कुछ टूल्स की, जो कि अभी हम यूज़ करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सब ने यूज़ किया हुआ है, जो नंबर 9 पे आ रहा है. इसके अलावा क्लिक व्यू, पावर BI, पाइथन और टेबलो, ये हम यूज़ कर रहे हैं. इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा रेड कर दिया था. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच वी आर स्टिल यूजिंग. और बाकी सारे जो हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी गुड थिंग्स, बट वी आर नॉट यूजिंग इट प्रैक्टिकली. ये जो है 8 प्रोसेसेस हैं. आई जस्ट वांटेड टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ ब्रीफ इनटू दैट कि ये 8 प्रोसेसेस हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं. सबसे पहले डाटा रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास कि क्या है डाटा एनालिटिक्स के प्रोसेस के अंदर,
कि हमें करना क्या है, व्हाट इज़ द आउटकम वी आर लुकिंग एट। फिर उसके बाद डाटा कलेक्शन करते हैं, उसी हिसाब से ये फील्ड्स हैं, ये काम हमें करना है। डाटा क्लीनिंग, ओह मैन, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स। डाटा को क्लीन करना, डाटा को अपने काम के मुताबिक करना। जो अभी हम बात कर रहे थे कि पिछले सिस्टम्स को नए सिस्टम्स के साथ मर्ज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। वो डाटा क्लीनिंग की वजह से होता है। पिछले सिस्टम्स में जैसे आप सिर्फ एग्जांपल ले लें, पहले CNIC जो है शायद वो 11 नंबर्स का होता था, अब अगर 14 नंबर्स का होता है, 13 नंबर्स का होता है, तो मर्जिंग देम, अगर आपके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट नंबर्स भी आ रहे हैं और CNIC नंबर्स भी आ रहे हैं, तो यूजिंग अ मैकेनिज्म कि आप दोनों को एक ही साथ यूज़ कर सकें। डाटा क्लीनिंग में एड्रेसेस जैसे अगर आ रहे हैं तो किसी ने कराची कॉमा PK लिख दिया होगा, किसी ने कराची कॉमा पाक लिख दिया होगा, उसको एक जगह लेकर आना, दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट। कोडिंग, कोडिंग के लिए आपके पास स्पेशलिस्ट होते हैं जो कोडिंग करते हैं और आपको कोडिंग करके आउटपुट निकाल के दे देते हैं कि ये चीज़ है। उस कोडिंग के साथ ही आपको देखना पड़ता है कि कौन कौन से डाटा एनालिसिस टूल्स हैं जो कि आपको विजुअलाइजेशन में हेल्प करेंगे। डाटा वैलिडेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कोडिंग का जो आउटपुट है वो तो कोडर डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। कोडर ने जो आपने उसको बताया उसके मुताबिक आउटपुट निकाल के दे दिया, बट इज़ इट रियली द आउटपुट विच यू आर लुकिंग फॉर? उसके लिए आपको दोबारा से जाना पड़ता है, डाटा वैलिडेशन करनी पड़ती है, जो आउटपुट निकल के आया वो एक्चुअली वही है। फॉल्स नेगेटिव्स भी होते हैं, फॉल्स पॉजिटिव्स भी होते हैं। इट टेक्स अस अ लॉट ऑफ टाइम। डाटा वैलिडेशन में डाटा क्लीनिंग के मसले निकल आते हैं, कोडिंग के मसले निकल आते हैं, जो डाटा एनालिसिस किया होता है उसके अंदर मसले निकल आते हैं। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जाएँ और डाटा निकाल के लाएंगे कौन कौन से एक्सपायर्ड CNICs पड़े हुए हैं आपके सिस्टम के अंदर आज की तारीख में, आप पहले CNIC की एक्सपायरी डेट का कॉलम उठाएंगे, बोलेंगे कि अच्छा इसमें मुझे ये दे दो, बट फिर आप उसके बाद कहेंगे कि ये एक्सपायर्ड CNICs जो 1 साल से ज़्यादा हैं, आपने कोडिंग की और आपने कहा कि ये CNICs 1 साल से एक्सपायर्ड, 1 साल से भी ज़्यादा हैं। जब आपने रन करना शुरू किया तो आपको पता चला कि इनमें से तो कुछ कॉर्पोरेट अकाउंट्स भी आ रहे हैं। कॉर्पोरेट अकाउंट्स में तो CNIC होता ही नहीं है, कॉर्पोरेट अकाउंट्स में तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है जो कि एक्सपायर होती ही नहीं है। तो आप डाटा वैलिडेशन में दोबारा जाएंगे, फिर उनको बोलेंगे कि हाँ दोबारा से इसकी कोडिंग करो या दोबारा से डाटा को क्लीन करो, इसमें से कॉर्पोरेट अकाउंट्स को, एंटिटी अकाउंट्स को निकालो, फिर डाटा को इंटरप्रेट करना। देखिए जो टेक्नोलॉजी वाला बंदा है वो अपने तरीके से देखेगा कि हाँ क्या इशू है, बट द बिजनेस पर्सन, जो बिजनेस एनालिस्ट होता है, दैट इज़ द पर्सन हु विल टेल यू कि डाटा को इस तरह इंटरप्रेट करो। ये जो एक्सपायर्ड CNICs हैं, इनमें से अगर कुछ एक्सपायर्ड CNICs ऐसे हैं जो कि बहुत अरसे से हैं या 5 साल से ज़्यादा से एक्सपायर्ड हैं पर उनके अकाउंट्स कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं, then we should block these accounts, या उन अकाउंट्स को हम इस तरीके से प्रेजेंट करें। इंटरप्रिटेशन करना डाटा की इज़ वन ऑफ द की एरिया और इसके लिए स्पेशलिस्ट्स होते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन, उस डाटा को सही से प्रेजेंट करना, अमेजिंग, बहुत ज़्यादा इसकी डाटा विजुअलाइजेशन के एक्सपर्ट्स अलग से मौजूद होते हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो पिछले पेजेस में हम बात कर रहे थे वो इन्हीं वजह से यूज़ हो रहे होते हैं। मूविंग ऑन क्विकली, जो भी हमने पिछले पेज पे बातें की थी, डाटा लेयर की इंटीग्रेशन और डाटा कलेक्शन यहाँ पे होगी, फिर ट्रांसलेशन जो है, क्लीनिंग, इंटरप्रिटेशन, प्रोसेसिंग और विजुअलाइजेशन और एनालिसिस वो जो है वो टॉप पे होगी और उसकी बेसिस पे फिर हम एक्शंस ले रहे होंगे। तो दिस इज जस्ट अनदर इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट वी वर डिस्कसिंग। ये एक एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की डाटा एनालिसिस के लिए, ये एक एग्जांपल है फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री जो हम करते हैं अपने पास एक इंटरनल ऑडिट के अंदर, किस तरीके से हम वो 8 के 8 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डाटा जहाँ पे हम डाटा को यूज़ करते हैं, द वे वेयर वी आर यूजिंग डाटा एनालिटिक्स। आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को छोड़ दें, आप फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर देखेंगे तो हम सर्विस क्वालिटी के अंदर यूज़ कर रहे हैं, क्लेम मैनेजमेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, रेगुलेटरी रिस्क के अंदर यूज़ कर रहे हैं, बेटर प्राइसिंग के अंदर, फ्रॉड डिटेक्शन हम लोग खुद कर रहे होते हैं, उसके लिए कस्टमर कंप्लेन मैनेजमेंट के अंदर वो सर्विस क्वालिटी से भी लिंक कर सकते हैं उसको, कस्टमर कंप्लेन को ऑपरेशनल एंड कंट्रोल वीकनेसेस के अंदर कर रहे होते हैं। This is another chart of getting up to date with how do you learn or how frequently you do this as some of the output. So going back, this is all from my side. I would like Firoz, agar koi question hai to we can go there.
Thank you, Rajat. Thank you so much. We're waiting in for questions. So, guys, if you have any relevant questions, do type in. जी प्लीज़ आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट, किसी भी एरिया से रिलेटेड, फिनटेक से, स्टार्टअप से, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से, डाटा एनालिसिस के हवाले से, ट्रेंड एनालिसिस जो हमने भी ट्रेंड प्रेजेंट किया उसके हवाले से कोई वॉट एवर थिंग्स यू हैव इन योर माइंड. वी कैन गिव कपल ऑफ मिनट्स टू पीपल. फिरोज जो हैं वो लोग टाइप कर रहे होंगे क्वेश्चंस, तो लिटिल बिट ऑफ टाइम. Sure, Rajat. No worries on that. I'm just going through the slides. ऐसी चीजें जो मैंने मिस कर दी which I should have covered in detail. Until we receive some questions, I have some things to discuss. Rajat, you would need to share the slide deck with me. A lot of people did request in the comment section that we would need the slides. So after the session, you can share the slides with me, either in PDF or PowerPoint, whichever is feasible for you. बिल्कुल ठीक And है. thank you. And another announcement for all the participants that there will be no session on Wednesday this week, but we will be having our session on Thursday. There's slight change in schedule this week. We won't be having the Wednesday session. We'll be having that session on Thursday. I hope you guys got that, but I'll just post a text in the WhatsApp group as well. Okay, we have started to receive some questions, Doctor. जी First जी. question is from Omar Hassan. Why do situations come like you go for an online deposit in bank and the person sitting on the other side of the table says the system is down? When can we finally have a solution for that? यार ये बड़ा प्रैक्टिकल मसला है जो मैं भी कह रहा था ना, इकोसिस्टम में मसला हो जाता है हमारे पास. और दिस डज नॉट ओनली हैपन टू द कस्टमर एट ब्रांचेस, दिस आल्सो हैपेंस इन सम ऑफ द एप्लीकेशंस. इट इज़ सिमिलर. मैं अभी आपने जब ज्वाइन किया था मैं 10 मिनट लेट था. उसकी वजह ये थी कि माई सिस्टम डज नॉट एक्सेप्ट गो टू मीटिंग एज अ नॉर्मल वेबसाइट. दे थिंक दैट इन दैट वेबसाइट there may be some malwares or some softwares which I should not be downloading, और ऐसी कोई चीज़ होगी. वी ब्लॉक अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स जिसमें हम शायद कोई डाटा अपलोड कर सकते हैं फ्रॉम आवर लैपटॉप. सो दिस फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी परस्पेक्टिव वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑन दैट. तो मुझे अलग से परमिशन लेनी पड़ी जिसमें मुझे 8-10 मिनट ज़्यादा लग गए. बट सिमिलरली जब हमारे पास बहुत सारी जगहों पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होती, लाइट चली गई है आपके पास, आपने अपना ब्रांच में जनरेटर चला लिया है, बट जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसके पास नहीं आ रही ट्रैफिक, उसके पास वो नहीं आ रही, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. फिर हमें बहुत सारी जगहों पे मसला भी होता है कि हम ब्रांचेस में जाके शायद जो डोंगल हम यूज़ करते हैं वाईफाई कनेक्टिविटी के, उसमें हमें मना कर दिया जाता है कि जब तक सिक्योर ना हो आप ना यूज़ करें इसको. वीपीएन में मसला आ जाता है, कभी कभी सिस्टम डाउन हो जाता है फॉर सम रीज़न. एंड दिस इज़ गोइंग बैक टू वन ऑफ द क्वेश्चंस कि हम साइबर सिक्योरिटी की वजह से प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं, और इस वजह से दिस इज़ अ रियल इशू. दिस इज़ समथिंग विच a lot of banks face, and we should not be facing that, to be honest with you. If our ecosystem is strong enough, we should not be facing that. जी. Thank you, Doctor. Another question from Salman. I think Salman is one of those guys who are very curious about his data being collected, or rather where he is working. So his question goes like, do you think State Bank of Pakistan is using data collected from banks to regulate banks, introducing new regulations? देखिए, एज अ रेगुलेटर, एनी रेगुलेटर, नॉट स्पेसिफिकली स्टेट बैंक, दे हैव अ लॉट ऑफ डाटा, और वो रेगुलेट भी करते हैं और उसकी बेसिस पे डायग्नोस्टिक्स भी करते हैं कि क्या चीज़ सही हो रही है, क्या चीज़ सही नहीं हो रही है, और किस तरीके से उन चीज़ों को सही किया जा सकता है. इफ़ यू आर आस्किंग कि डाटा स्टेट बैंक के पास जाता होगा, बिल्कुल जाता होगा.
बहुत सारा डाटा प्राइमरी आईडी के थ्रू जाता है, बहुत सारा डाटा जो है वो शायद प्राइमरी आईडीज़ के थ्रू नहीं जाता होगा, जैसे कि कलेक्टिवली कितने कस्टमर्स हैं आपके पास, कितने कस्टमर्स ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की हैं, कितने कस्टमर्स जो हैं वो कैश डिपॉजिट कराते हैं, कितने कस्टमर्स की एज ब्रैकेट क्या है, जेंडर डाइवर्सिटी क्या है, तो बहुत सारा डाटा जो है वो कंबाइन होके जाता होगा। कुछ डाटा जो है शायद वो अनक्लेम डिपॉजिट्स का डाटा है या फिर डॉर्मेंट अकाउंट्स का डाटा है, या इस तरह का डाटा जो है वो आपका प्राइमरी आईडी के थ्रू जिसके साथ जाता होगा, क्योंकि अनक्लेम की आप डिपॉजिट, जब अनक्लेम डिपॉजिट्स 10 साल हो गए आपने ट्रांजेक्शन नहीं की, तो द मनी गोज टू स्टेट बैंक अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द पर्सन। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हाट डू दे डू यूज़ डाटा फॉर, रेगुलेशन करना भी एक मेन पर्पस होता है, बट अलॉन्ग विद दैट to making sure that there are no complaints in the system. The system is working smoothly because State Bank is very proactive, or regulator normally generally in financial services is very proactive in making sure कि ऐसी कोई चीज़ ना हो रही है which hurts the customer or public at large. तो मेरा ख्याल है कि data is there. Sometimes the data is there with the primary IDs, but most of the time it's collectively data, collective data. जी Thank you, जी Roshan. जी Let's take some more questions. फिरोज आपकी आवाज़ कट गई। Roshan, I'm screening some questions. Just give me 1 second. ओके सो अभी जो लास्ट सवाल हुआ था, इसमें जो मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैच्योर कंट्रीज हैं, उसमें रेगुलेटर हैज़ स्टार्टेड वर्किंग ऑन रिस्क बेस्ड सुपरविजन। रिस्क बेस्ड सुपरविजन में ये लोग क्या करते हैं कि दे स्टार्ट वर्किंग विद द बैंक्स एंड obtaining the data and working from data. State Bank Pakistan is also working or issuing the guidelines or creating a framework जहाँ पे वो इस तरह की चीज़ों पे काम कर रहे हैं। So once you have the risk-based supervision criteria, you'll start working on data again without primary ID in some cases and with some primary ID maybe. और उसके बाद वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एज पर द रेगुलेशन नहीं हो रही हैं, एंड देन they inquire the banks to tell to inquire the bank to respond to them. जी फिरोज। There is a question from Mohammed Suleiman Samab. I'll rephrase it for better understanding. So, there have been cases in the past when spoiled or fake notes have been provided by the ATM machine when you experience a cash withdrawal. So, his question is around that specific scenario, and he wants to know what would the surveillance in such digital age for such for such problems. स्पॉइल नोट्स से ज़्यादा लेट मी टेक इट टू द चेक्स, फेक चेक्स जो आते हैं ब्रांचेस में, क्योंकि स्पॉइल नोट्स जो हैं जाहिर है कि अगर कोई ऐसा नोट आपके पास आया है तो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टू टेकिंग इट टू स्टेट बैंक, टू टेकिंग बैक इट टू द बैंक कि भाई ये नोट मेरे पास आया है, इसका मैं क्या करूँ, और इस तरीके से मैंने ये नोट निकाला था एटीएम से या आपने मुझे कैश काउंटर पे दिया था। बट ज़ाहिर है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें अगर उस मैकेनिज्म में मैं इसको देखूं तो more features are being added to the checks or security stationery which we call it to make sure कि वो fake इतनी आसानी से ना हो सके। Definitely this currency note is being issued by State Bank and they have recently changed all the currency notes, so there may be more features coming. There is a mechanism which you can follow to return if you have any such instance. बट जो सिक्योरिटी स्टेशनरी जो बैंक्स प्रिंट करते हैं अपनी, जैसे स्टेट बैंक जैसे एबीसी बैंक जो है वो अपनी चेक बुक इशू करता है, एबीसी बैंक अपना पे ऑर्डर इशू करता है, उस उन फीचर्स को मेक श्योर करना कि वो फीचर सही से यूज़ हो रहे हों, या साइबर सिक्योरिटी के फीचर्स जो भी हमने बात की आईबीएफटी के लिए कि पासवर्ड आपका एक्सपायर होना चाहिए, पासवर्ड की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं इसका एक पूरा मैकेनिज्म होता है, बैंक में फ्रेमवर्क होता है, एंड दैट्स हाउ दे फॉलो इट। और इस पर फिर डाटा भी गैदर होता है, अगर ऐसी कोई चीज़ निकल के आ रही है जो बार बार हो रही है तो बैंक्स एड्रेस दैट थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म्स।
जी फिरोज साहब। Thank you, Roshab. Javadur Rahman has a question, and it's more of a knowledge-based question. So he explains a situation where a certain organization has a software which creates logs if a developer performs any changes in the records, or if there is any manipulation in the records. So he wants to know, does this happen with banks and digital transactions happening in real time? Does State Bank of Pakistan regulate it or avoid skimming activities through such software? देखें इसमें इफ़ यू आर आस्किंग मी अबाउट द कंट्रोल्स कि किसी डेवलपर ने जाके अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ एट द फर्स्ट स्टांस। अगर आप अभी हम थोड़ी देर पहले कोसो फ्रेमवर्क की और कोविड फ्रेमवर्क की और इन सारे फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे, जो SDLC के सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फ्रेमवर्क्स हैं, डेवलपर्स इन नो मैनर हैव एक्सेस टू पोस्ट ट्रांजैक्शंस। Transactions can only be posted by the tellers or the front end staff जो कि ये transactions कर सकता है। अगर हम डेवलपर को राइट्स दे देंगे तो देन इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। डेवलपर तो सारा का सारा काम जो है वो अपने ट्रांजेक्शन अपने पास से कर लेगा, बिकॉज ही इज़ डेवलप्ड द सिस्टम। तो देर इज़ अ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ के बाद देखें हमारे पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स होते हैं। मेकर चेकर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि टेलर जो है वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा और उसके ऊपर जो सुपरवाइज़र है वो उसको चेक करके वैलिडेट करेगा कि हाँ ये ट्रांजेक्शन सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद डे एंड के ऊपर पूरे एक प्रोसीजर्स होते हैं कि ये सारे ट्रांजेक्शन्स, कैश का बैलेंस कैश से टाई होता है, क्लियरिंग का बैलेंस क्लियरिंग से टाई होता है, इंटरनल GL का बैलेंस इंटरनल GL से टाई होता है। तो देयर आर मैकेनिज्म्स एट डे एंड कि ये सारी चीज़ें टाई हो रही हों। फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंट चीज़ें टाई हो रही होती हैं वाउचर्स के साथ, कि अगर कस्टमर आया है फिजिकल वाउचर ब्रांच में, क्योंकि वहीं पे ये वाले इश्यूज आएंगे। जो ऑनलाइन बैंकिंग है उसमें IBFT होगी तो कस्टमर ने खुद इनिशिएट की होगी और उसके लिए OTP आपके पास मौजूद है, उसके लिए आपके पास पासवर्ड प्रोटेक्शंस मौजूद हैं, उसके ऊपर मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन की जो हम बात करते हैं वो मौजूद है। जैसे अगर आप नई जगह पे ऐप, नए मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करते हैं तो दे आस्क यू टू सेंड अनदर वेरिफिकेशन, जिसके तहत फिर आप वैलिडेट करते हैं अपनी नई डिवाइस। फिर OTP भेजते हैं कि हाँ आप ही के पास आपका मोबाइल है और आप ही पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बेनिफिशियरी एडिशन पे भी इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। तो हमें रिस्क कस्टमर इनिशिएटेड ट्रांजैक्शन में नहीं है। जो रिस्क आप जिसकी बात कर रहे हैं, डेवलपर का रिस्क भी मैंने आपको बता दिया कि वो जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं उनको हम एक्सेस नहीं देते। जिसने सिस्टम डेवलप किया वो एक जगह पे अलग रहता है। फिर उसके बाद डिफरेंट लेयर ऑफ कंट्रोल्स हैं जिसमें हम वैलिडेट कर रहे होते हैं ये सारी चीज़ें मौजूद हों। फिर हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल, जैसे कस्टमर की स्टेटमेंट जब जाएगी और अगर हमने कस्टमर के पास गलत ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, उसके पास विड्रॉल दिखा दिया जबकि एक्चुअली उसने विड्रॉल नहीं किया, तो हमारे पास उसका जिस इंस्ट्रूमेंट के तहत उसने विड्रॉल किया होगा वो अगर नहीं होगा, तो इस तरह के बहुत सारे मैसिव मैकेनिज्म्स मौजूद हैं जस्ट टू मेक श्योर कि इस तरह की ट्रांजैक्शंस ना हो रही हों जो लेजिटिमेट नहीं है। जी फिरोज। Thank you, Rosab. I think that's all for the questions. We do not have any other question, and we have reached the dot at the clock. Uh, so thank you so much for the knowledge that you have shared with us today. And we will be getting back on Thursday, 13th of October. There won't be any session on Wednesday. And for anything for closing remarks, Rosab, anything that you want to add? Thank you everyone for attending. I know this is an extra effort which you all are making, क्योंकि जाहिर है कि everybody has other things to do as well, but you have made a call, you have made an effort to be here, and I'm very glad you did, because that is something which makes us apart from other people. So best of luck for understanding and digital transformation. It's a very good area. This is the growing area. इस तरह के जो webinars होते हैं, that is just there to increase your insights, increase your knowledge, but
To learn that, to implement that, you need to do a lot more than this. उसके लिए भी हमने जो skills देख रहे थे, हम बात कर रहे थे, वो skills सीखनी पड़ती हैं. And then you have to go to the organization which is moving in the right direction ताकि आप उनके साथ grow कर सकें, उनके साथ learn कर सकें. So these are my 2 cents. और I'm looking forward to the webinar on Thursday. BFSI से related कोई भी question होता है आपको, I am there to help. Or just reach out to me through Firoz, through any of the social media platforms which are available, and we'll be connected, and I'll be able to address your questions. Thank you, Raghusab. Thank you so much. That's it for today, everybody. I wish you all a very pleasant week ahead, and bye bye. That's it. Okay, thank you. I'll be disconnecting. Assalamu alaikum. Well.